Hello everyone. भाई कैसे हो भाई? How is the Saturday going? It's a big Saturday. Let's be real. As much as भाई FA Cup Final इतना excitement नहीं लाता है generally, but it is one of the oldest trophies. And for that reason alone मैं तो बोलता हूँ भाई FA Cup Final has to be very important day. और me personally भाई this is one day Wembley. It has to be special for me because again being a Chelsea fan, yes I know, but at some point बहुत सारे Wembley फाइनल दे देखे और साथ साथ में आज तो स्पेशल है बिकॉज इट्स अ मैनचेस्टर डार्बी एंड फर्स्ट टाइम मैनचेस्टर डार्बी एफए का फाइनल हो रहा है तो वील हैव होपफुली सम फन इन द वॉच अलोंग एंड वील हैव एवरीवन जॉइन. वो कैसे होगा भाई? सब लोग अगेन रूल ऑफ थंब क्या है? लेट्स हिट दैट लाइक बटन. सबसे पहले जल्दी से लेट्स गेट टू दैट 50 लाइक्स क्विकली. सर डेरिन बोले डेरिन बिग अप टू द ऑलमाइटी फैम. यहाँ पर लेट्स हिट दैट लाइक बटन एंड साथ साथ में मैंने शेयर किया है ऑन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी पोस्ट जैसे बोलता हूँ दोनों ही चैनल्स में. और बाय द वे यस वी आर पोटेंशियली गोइंग टू बी बैक टू बैक. यहाँ पर पहले लाइव एंड देन वी आर गोइंग टू बी ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. यहाँ पर वील डू न्यूट्रल वॉच अलोंग एंड होपफुली सम ड्रामा. लेकिन बाद में यस देयर इज सम अ लॉट ऑफ ट्रांसफर टॉक व्हिच इज पेंडिंग एज वेल एज टैक्टिकल एनालिसिस. तो भाई साहब वेलकम एवरीवन. लेट्स हिट दैट लाइक बटन. और क्या बोल रहे भाई जनता in terms of what has happened in the starting 11? Are there any surprises? To be honest मतलब सरप्राइज बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते लेकिन at some point मैं एक्सपेक्ट कर रहा था that a Fred is going to play tonight and yes Fred is playing और yes let's have people. भाई क्या बात है? नोटिफिकेशन नहीं आएगा सब लोग को? सब लोग भाई आ जाइए. कैसे होगा? आप लोगों को लाइक बटन दबाना पड़ेगा. लेट्स हैव द लाइक बटन्स अप as well as you can share it. I have shared it in the community post. I repeat, if everyone hit that like button on the community post in the stream as well as share it. एक tweet गया है तो hopefully you can share the link as well in your stories. Win or lose, City till I die. Football Creeks in the house. Of course, as a City fan, yes. बहुत केजी गेम. A 1-0 to anyone. Football Creeks is saying and Foden scores the winner. इनका तो prediction आ गया भाई. Stop the treble. I am Gogo Man United today. केशव बोल रहे. Hello शाश्वत भाई कैसे हो? And yes, let's get to 50 likes quickly. Come on, let's get that. FA Cup, where is Chelsea? Last 3 बार तो Chelsea थी ना. हाँ, but to be honest, English Cup से something with Chelsea actually is there. By the way, हमने बहुत सारे FA Cup final हारे recently. As much as we have been very successful. याद रखिए, Manchester United are second most successful side and third is Chelsea along with Liverpool, I believe. लेकिन Man City are getting close as well with 6 if I'm not wrong. मैं तो अच्छा फाइनल देखूंगा. चलो कोई नहीं प्रबोधनी, नो प्रॉब्लम एट दैट. वी माइट रिएक्ट ऑन ईदर. भाई लेट्स हैव मोर पीपल इन. क्या अंकित भाई वेज यूनाइटेड जर्सी? आई थॉट वी वर फ्रेंड्स. मैं रेड पहन रहा हूँ यार. लेकिन हाँ ये नथिंग अगेंस्ट मैन सिटी फैंस. ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है मेरा? ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि भाई कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लगता है if the underdog wins. And let's be real, as much as Man City are 80% favorites, they deserve it in terms of जो सीजन जो किया है उन्होंने. लेकिन अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव रीच्ड हियर और आप आर्ग्यू कर सकते हो at least in the semi-final Manchester United has that more difficult tie in Brighton. Not no disrespect to Burnley यहाँ पर, but just saying. और yes, Man City beat Chelsea earlier on, वो भी याद है. तो it's not very easy as well उनका रन. लेकिन क्या बोल रहे भाई? अकांजी स्टार्टिंग अब सुनने में आया था. अकांजी was potentially going to be injured. तो पता नहीं अब whether he's 100% fit or not, but let's see. Hopefully for Man City's sake he's not injured. Nathan Ake obviously hasn't recovered in time. Ortega starting भाई FA Cup final. FA Cup का वो गोलकीपर रहा है for Man City as much as anyway Edison expected नहीं थे. आज शुरू के बहुत सारे न्यूज आ रहे थे. And Kyle Walker starts in that right center back role and that's going to be interesting as well क्योंकि recently उन्होंने अच्छा किया in the last couple of months. Grealish, Gundogan, De Bruyne और Silva. It is and along with Stones and Rodri. छह है ना. I think that is the key for Man City as much as Erling Haaland scores you the goals. हाँ मैं सोच रहा था maybe because next week Champions League final है maybe Mahrez खेले, Foden खेले. लेकिन interestingly they have not started them. देखते हैं क्यों was the reason. Ortega जरूर शुरू करा है. Manchester United on the other hand, I don't think there are a lot of experimentation. थोड़ा बहुत मैं सोच रहा था मे बी एरिक्सन को शायद बिठाए आज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे माइट गो टो टू टो इन मिडफील्ड विद मैन सिटी क्योंकि यहाँ पर 5 वर्सेस 6 हो सकता है इन मिडफील्ड और अदर 4 वर्सेस 3 हो सकता है कैसिमिरो, एरिक्सन और फ्रेड. तो वहीं पर फ्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. आई थिंक फ्रेड विल हैव अ जॉब प्रॉपर ऑन केविन डी ब्रुयने. आई थिंक वो तो अनिवार्य है. लेकिन अगेन ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड, इंटरेस्टिंग दैट. देखते हैं वेदर दैट वर्क्स और नॉट. राशफोर्ड स्टार्टिंग अप फ्रंट एंड नॉट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. अगेन मतलब बेंच में ऑब्वियसली
there's no argument. Pretty sure Man City का bench stronger है, unless आप बोलो आप एक Wout Weghorst fan हो, और of course Garnacho है for sure from Manchester United side, as well as the Lord Harry Maguire. भाई सब लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग? Yes, let's hit that like button. Let's get to 50 likes quickly. Come on, Dave in the house. क्या क्या हाल है भाई? 30 minutes prior नोटिफिकेशन नहीं आया भाई? कौन से चैनल में आ रहा है सब लोग? थोड़ा याद दिला दीजिए मुझे. सोनी 2 में आ रहा है कि सोनी 5 में आ रहा है कि सोनी 3 में आ रहा है? सोनी 2 में आता है जनरली बड़े गेम्स तो. लेट मी जस्ट सी सोनी टीम 2 में आ रहा है. मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ ऑन माई सोनी लिव ऐप. हाँ चलो, आई थिंक यहीं पर आ रहा है. एक लाइव शो दिखा रहा है, बट आई डोंट नो इफ इट्स, या आई थिंक इट्स दैट इटसेल्फ. होपफुली इट्स दैट इटसेल्फ. चलो भाई कोई नहीं. अरे रिजवान ब्रो, क्या ही बोलूं, पता नहीं है, सीजन एंड हो गया है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत आ गई है बिकॉज ऑफ हमारा सीजन नॉट गोइंग वेल, दैट इज चेल्सी एटलीस्ट इन इंग्लैंड. हाँ लेकिन नॉट टू डिससैटिस्फाइड विद एसी मिलान, आई हैव टू से दैट फॉर पीपल हु डू नो दैट मेरा एक है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर श्योर. भाई एक सेकंड, मेरा फोन अटक जा भाई, अटक जा. बहुत ही बदमाशी कर रहा है भाई मेरा फोन. एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ चलो, वेरी टेंस. रनो जॉय सेन इन द हाउस, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? यस, बाय द वे पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग इन, the big news is obviously that Man City are almost going unchanged from the Champions League. भाई बड़े गेम में Man City have turned up in cups this time. ठीक है, let's be real, especially the Champions League. भाई बीट बायर्न म्यूनिख का, बीट रियल मैड्रिड धो डाला है. क्या भी मतलब कैन वी एक्सपेक्ट द मैन सिटी टू डू द सिमिलर थिंग ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड? बट रिमेंबर, अगर हेड टू हेड ध्यान रखे तो हमने कवर ही किया था कल प्रीव्यू में, जो पीपल माइट हैव मिस्ड इट आउट, आई डोंट नो, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बीटन मैन सिटी लास्ट टाइम अराउंड. हाँ प्रीमियर लीग में था, बट वॉट एवर इट इज, दैट इज अ फैक्ट. सो आई डोंट थिंक इजी लेंगे सिटी, एज मच एज इज द फाइनल, तो इजी तो क्यों लेना है भाई? किंग केविन, मैन सिटी. ओके, देयर इज वन मोर गेम गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. ओके, अभिनव बोल रहे हैं 4-1 टू मैन सिटी. वाह, तो अभिनव तो बोल रहे हैं जो चीज बायर्न म्यूनिख ने फेस की थी एज वेल एज रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फेस समथिंग लाइक दैट. हालैंड 2 गोल्स, ग्रिलिश, केडीबी एंड रैशफोर्ड. मार्को रॉयस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इन द हाउस, व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप? yes, again big respect to them, but again मेरी टीम होती तो भाई मैं उस पर प्रायोरिटाइज करता. लेकिन let's be real, as much as I respect the women's game and big up to them, absolutely बढ़िया फाइनल वहां भी हो, हम रिएक्ट कर सकते हैं. if you guys are watching, let me know. but let's be real, the oldest thing that is there exists in football, जितना मुझे मालूम है भाई, is one of them for sure the FA Cup final, and that's why it's very very big. Ankit wearing United jersey as bad as seeing Mason Mount in one as नहीं भाई, just a red color jersey by love coincidence guys. Should I change? Should I put in a neutral color, referee color jersey? I don't know. Ortega is giving me Kepa vibes from 2021 FA Cup final. Wow. nahi, I think let's see. I think he's a good goalkeeper generally speaking, but again either ways मैं react नहीं करना चाहूंगा. Obviously Ederson a big miss in terms of distribution, लेकिन I think short saving में it's not he's not too bad at all. In fact he's highly rated by City fans, जहाँ तक मुझे मालूम है. Is the Chelsea Almighty Blues community supporting us, Ankit Luman? I believe so. कल जो मैंने किया था प्रीव्यू शो, मुझे लगा कि यार there were more Manchester United fans in the house than Man City fans in the house. But we know that भाई I would love a excellent dramatic Manchester derby. भाई आज be ready guys. Bruno Fernandes and Casemiro भाई definitely यार पैर डालेंगे अपना. That thing, Basin beware for sure. And Grealish भाई he can lose it as well. It's an FA Cup final, the English players. और वहीं पर मैं थोड़ा सा surprised भी हूँ that Foden is not starting, considering that as well as यार the Champions League final next week है. थोड़ा बहुत surprised हूँ. मैं तो ये भी सोचा था कि just about maybe Calvin Phillips, who's towards the end of the season खेला है, might be playing, but City are not taking a chance. They believe in the squad, and yes, Nathan Ake bench पर है, Laporte bench पर है, so maybe one of them might play in the Champions League final. लेकिन I think it's about continuity. Akanji, Diaz, and Walker has done it recently, और वो risk लेना चाह रहे. Despite हो सकता है कि अगर injury हो तो भाई they might miss the Champions League final. Some players, it might be possible. Again, we don't want to see injuries, but remember, it's a Manchester derby, it's an FA Cup final, a historical one at that. Definitely यार डबल दोनों को मिलेगा भाई, डोमेस्टिक डबल मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और सिटी तो भाई यूरोपियन ट्रेबल इज व्हाट दे आर एमिंग, रिमेंबर दैट. तो कहीं ना कहीं बोथ द टीम्स विल बी गेटिंग देयर. मुझे याद है एफए कप की बात हो रही है ना, कप एंड एफए कप में भाई वेन रूनी ने क्या बढ़िया गोल मारा था यार. दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट forget. The Manchester derby, the Wayne Rooney goal. Why does anyone remember that?
what a superb bicycle kick. I remember that as an out of the world वाला चीज. लेकिन FA Cup final पहली बार हो रहा है. Again repeated between Manchester United and Man City. And of course, it's at Wembley. The Walker Stone Silva side is a masterclass from Pep. Okay. आई थिंक कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी. अगेन हम टैक्टिकली कल प्रीव्यू में बात ही किए थे. आई बिलीव फ्रेड विल हैव टू गो टो टू टो विद डिब्रोइना एज मच एज डिब्रोइना नहीं देने देगा उसको वो. लेकिन द फैक्ट इज क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस राइटिश खेल रहे हैं, वो थोड़ा नैरो खेलेंगे, तो इल बी अ कोर विद एरिक्सन, फ्रेड, कैसिमिरो, फर्नांडिस वर्सेस गुंडोगन, रॉड्री, स्टोन्स और डिब्रोइना. वो बेसिकली एक 4 वर्सेस 4 मुझे देखने में मिलेगा इन माय ओपिनियन. अगेन एरन वैन बिसाका वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा. हो सकता है मैन सिटी जब भी, यार लेट्स बी रियल, मैन सिटी पोजीशन डोमिनेट करेगी, लेकिन वैन बिसाका जब भी मिलेगा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही यूटिलाइजेस दैट स्पेस इन फ्रंट, क्योंकि फर्नांडिस टक इन करेंगे तो वहां पर हो भी सकता है दैट मैन सिटी को एक्स्ट्रा स्पेस मिले टू अटैक, स्पेशली अ जैक ग्रिलिश. ऑन द अदर हैंड अगेन सैंचो एंड शॉ, very crucial that they are up with Bernardo Silva, who's very good defensively as well. Not just that. Shaw, I know अच्छा season गया है, but what are you saying, guys? What are you saying? 5 मिनट बाकी है अभी. Everyone, what battle आप देखना चाहते हो? मतलब what is that एक battle जो आपको लगता है is the main battle in this time? Again, remember we are live again at 10:30 on ABFC. Someone please beat them, citizens. बोल रहे अजिंक्य, if City keeps a clean sheet. अजिंक्य, aren't you a City fan? अजिंक्य गाली देंगे, but I thought. Okay, someone please beat them, citizens. So I think Ajinkya is addressing the citizens to beat Manchester United. Let me know. But if City keeps a clean sheet in this game, Man City will become the first ever to win a FA Cup without conceding a single. Wow. That's absolutely next level, bro. Absolutely next level. और कहीं ना कहीं I know that उसके साथ में याद आता है कि मारेज का बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट गया है. कहीं ना कहीं unfair है that he's not starting, but other than that, continuity is the key for them. The City side, Messi is good in the house, looks so much stronger than United, of course. Sony 2 में आ रहा है. Yes, thanks bro, thanks. भाई यहाँ पर royalties are in the house and they're all shaking hands. भाई टाइम पास होता है बहुत FA Cup फाइनल में. You know that जो होता है अपना प्री सीजन में, I call it pre-season, लेकिन more like the community shield में होता है, and then the FA Cup final. These are two big occasions for Wembley generally speaking. और of course Carabao Cup final भी होता है भाई. Let's see. 2-1 to United, Marco Reus बोल रहे हैं. Interesting. Rizwan तो बोल रहे हैं happy Liverpool play UEL and Barcelona will play UCL. Okay, fair enough. So you get to enjoy both the tournaments, is what Rizwan is saying. Messi's got 3-1 to City दे रहे हैं. And yes, Jiten in the house as well. Ranjoy, of course, 1-0 late header by Casemiro. अरे बाप रे. Casemiro, by the way, talk about bicycle kicks and Rooney. Bhai, recently he got a bicycle kick as well, didn't he? But again, bhai, सब लोग आ जा रहे यार. रही है यार, come on, let's be real, man. I know, मतलब I love the fact that आप लोग attendance देने आ जाते हो भाई, कुछ लोग with maybe you basically feel for my hard work as well as you feel that we kind of deserve to see each other. But bhai, it's about watching along together. It's about basically just being like a set of friends. It's an almighty fam, like I always say. And भाई हर एक स्ट्रीम में, मतलब इतने सैकड़ों स्ट्रीम्स में भाई रिपीट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता. लेट्स हिट दैट लाइक बटन. Almighty Sports requires more, even more love. Not that Almighty Blues doesn't. Both requires a lot of love, Abibi. We are a long way to go. And yes, as much as we have completed 9K on ABFC, the target for the season was 10K on ABFC and 5K on Almighty Sports. Yes, we have fallen short of that. Lekin we can get to the next level. We are still growing, and thanks to you all. Big shout out यहाँ to especially to the mods and members by Darren, जिन्होंने last stream में membership भी gift किए थे. I remember that absolutely. तो shout out to Darren as well as all the other members. भाई बाकी members run join the house as well as others. भाई जुड़ जाइए. Hopefully मैं एक group में message कर दूँ. भाई if anyone can help me out in messaging the group, any of the members, or maybe I can do it self. I don't know, for whatever reason notifications नहीं आ रही है, so I need definitely more support, guys. Definitely all the support I get is much love, but यहाँ पर भाई look at the expressions of the members यहाँ पर. Look at the expressions of the members. Okay. I look at the atmosphere. Wembley is totally split यार. Manchester लग रहा है भाई part 2 यहाँ पर कहीं ना कहीं. चलो कोई नहीं. If City wins the double, where would you put them in Big Six ranking? भाई to be honest, मतलब it's great, but what say over the years मैं बोला even Premier League era में what say Liverpool, Chelsea, Manchester United, of course, in my opinion, still the most successful side as much as मैं Chelsea fan हूँ, और Arsenal. I think अभी भी overall आप बोलो say in the last 40, 50, 60 years, I would still rate them higher.
इट इज दैट जो सर एलेक्स ने किया था ना, स्पेशली अगर आप कंपेयर कर रहे हो बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैन सिटी, ही हैड डन इट फॉर नॉट ओनली सीजंस टुगेदर बट आल्सो आई थिंक उन्होंने स्क्वाड चेंज देखा है यार पूरा 2-3 बार, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज द नेक्स्ट स्टेज फॉर पेप गार्डियोला इफ ही वांट्स टू स्टे देयर, नेक्स्ट स्टेज फॉर मे बी लिवरपूल व्हिच इज मतलब अभी भी बहुत फार है क्लब फ्रॉम दैट, जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ इंग्लैंड जो स्टेबल clubs है अभी, you can say that in the last 10 years definitely, last 15 years also I would say definitely they're in right up there, लेकिन in the last say 25 years अभी भी Man City has to do lots especially in the FA Cup, so I don't see that way, लेकिन हाँ अगर treble हो जाता है then definitely बात करनी पड़ेगी, absolutely this is gonna be tactical. United to soak up the pressure, United should drag them to pens, that's the minimum they can do to not lose. मतलब मुझे लगता है काफी क्लोज होने वाला मैच है, अगेन रिमेंबर यहाँ पर हम वॉच अलोंग करें गाइस, और मैं फॉर व्हाटएवर रीजन अगेन कमेंट्री सुन नहीं रहा, आई कैन डेफिनेटली फील द एटमॉस्फेयर विद द कमेंट्री समटाइम विद द क्राउड नॉइज, दैट डेफिनेटली हेल्प्स, बट भाई यहाँ पर हमारा टाइम स्टैम्प गौर करिएगा, लुक एट द सिटी फैंस ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है भाई, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, राणा जॉय सेन तो भाई प्रॉपर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, इट इज टोटली अनफेयर इन मारेज, यस अभिषेक इन द हाउस, क्या हाल है भाई सब लोग, come on, अरे कोहली वैन, बट अगेन आई डोंट थिंक दैट शुड बी द सेंटर स्टेज, बट बिग अप टू हिम यार, अगेन मेरे पास होते पैसे तो मैं भी जाता भाई, आप लोग बोलते अंकित भी है और साथ में जाएंगे कभी कभी, कभी हम लोग जाएंगे फ्यूचर में, लेट्स सी, वी विल हैव दैट एम फॉर श्योर टुगेदर, व्हाट डू यू थिंक, बट भाई गुंडोगन looks like it's all set, maybe it is his last FA Cup match for Man City, remember it, maybe it is last, मतलब पेनल्टीमेट मैच, लास्ट तो नहीं, खैर चैंपियंस फाइनल बाकी है, क्या लगता है गुंडोगन माइट गो एज वेल, राइट, रिमेंबर दैट, ओके युवराज सिंह इज आल्सो देयर, ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर पीपल हु डू नॉट नो, अगेन भाई सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, मुझे लगता है एज मच एज सिटी हैव बीन डोमिनेटिंग द बिग कप मैचेस इस सीजन में, मुझे लगता है दिस विल बी अ क्लोजर मैच देन पीपल एंटिसिपेट, एटमॉस्फेयर इज क्रेजी, एरिक टेन हाग का याद है क्या स्पीच था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट लीग सीजन, लीग मैच, तो वो मुझे लगता है इफेक्ट करेगा, along with maybe just the fact that वो डबल ट्रेबल वाला जो चीज चल रहा है ना, वो भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो हीटेड मैच होगा एट टाइम्स, आई कैन एक्सपेक्ट टैकल्स, सो विद दैट आई कैन एक्सपेक्ट मे बी अ रेड कार्ड टुवर्ड्स द एंड, लेकिन मुझे लगता है एक ऑड गोल, एंड आई एम गोइंग फॉर द रोमांटिक्स, आई एम गोइंग फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड विक्ट्री, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लाइनअप, एंड आई थिंक इट इज अबाउट नॉट टू लूज in the beginning half an hour is what I'm guessing, although Aaron Wan-Bissaka मैं बोलता हूँ, remember we'll have a lot of space, at the same time Grealish might have the other way around, so I think that all of a sudden might be a very important one, तो भाई यहाँ पर मैंने अपना टाइम स्टैम्प शुरू कर दिया है, मैच हैज बिगन एवरीवन, लेट्स हैव द स्कोर प्रेडिक्शंस इन द चैट राइट अवे, कम ऑन लेट्स गेट इन देयर, एंड अगर आपने नहीं किया लेट्स पुट इन द स्कोर प्रेडिक्शंस, और कौन स्कोर करेगा, और बैटिंग गोल, ओ माय गॉड मैन सिटी ब्रो, भाई एब्सोल्युटली chaos, Man City has scored, Gundogan जो मैंने बोला might be the person who might get his last FA Cup fixture, और उसने स्कोर कर दिया within a minute, within 30 seconds, pathetic man if you're a Manchester United fan, and awesome if you're a Man City fan. This is the FA Cup at its best, the final, it's a proper Manchester derby, abhi the tie will turn up, और कहीं ना कहीं it is playing into City's hands, because Manchester United now has to go for it. Ortega with a brilliant distribution to begin with itself, भाई यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड हैव डन बेटर डिफेंसिवली, दो भाई दोनों ही बॉल मैन सिटी ने विन किया, went to a Gundogan, a superb volley, what awesome technique भाई, Gundogan भाई, the guy who potentially might go to Arsenal or a Barcelona, भाई हम क्यों नहीं जा रहे यार भाई, just try him man, यहाँ पर Kovacic is replacing Gundogan, as much as I love Kovacic, he's nowhere close to Gundogan, let's be real about it, especially towards the end of the season, भाई गौरव तो अभी प्रेडिक्शन दे रहे 3-2 टू सिटी, तो बोल रहे और बहुत गोल्स आने वाला, एंड यस आई एम गोइंग टू चेंज द स्कोर लाइन विद इन 30 सेकंड्स, वो कितने सेकंड्स हुए एवरीवन, मतलब आई थिंक 20 सेकंड गोल हुआ कहीं ना कहीं, इट वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल स्टार्ट मैन, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कमिसरेशन ऑलरेडी ब्रो, बोलूंगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यू आर प्लेइंग टू सिटीज हैंड्स, आई डोंट थिंक दे कैन जस्ट सिट बैक नाउ, I don't think they can just go toe to toe. I think हम थोड़ा देखें ज्यादा, पैनिक नहीं करेंगे एरिक टेन हाग, knowing him, but still I feel कि कहीं ना कहीं a goal is required for Manchester United in the first half. I generally do, or you can say concede नहीं करना in the first half anymore. सिटी ढो डालेगा, मेसी इज गुड बोल रहे हैं, अरे भाई साहब डरेन तो एलओएल कर रहे हैं अभिषेक भी, नो प्रॉब्लम उमर, आई वुड से अंकित ब्रो, आई वुड से अंकित, यस
मैं अपने आप को सेल्फ ब्रैग करता हूँ भाई, हमें तो घंटा मालूम है ब्रो, अपना नया डायलॉग, लेकिन मच लव उमर, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, द फैक्ट बीइंग दैट ऑब्वियसली आई एम हर्षा बोगले फैन यार, नो टू बी व्हाट द हेल, पानी लेने गया और गोल भी आ गया। हाँ भाई, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, ओटेगा जो आज शुरू कर रहे, ब्रिलियंट बॉल, एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉल मैं बोल रहा हूँ भाई, और वहां पर 2 हेडर्स उन्होंने जीता। कौन जीता भाई चैट में बोल दीजिए, मुझे पता भी नहीं आता पता किसने जीता, हेडर जीता है, बट in the end it fell to I think De Bruyne. Okay, De Bruyne won the second header यार, और वहां पर obviously Man City defense was at fault again. Remember, Licha is not there. Is it something for that reason that Lindelof couldn't win? I don't know कि यार क्योंकि De Bruyne has एक होता ना fear instill करता कहीं ना कहीं, but again De Bruyne won it. अभी challenge आ रहा है एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, लेकिन हाँ गुंडोगन व्हाट अ ब्रिलियंट वॉली, 13 seconds, वाओ सागर थैंक्स यार, 13 seconds भाई, सब लोग यहाँ पर 13 people watching, let's have 130 people watching, come on guys, we are a fam of 3,700 almost, and yes we are like about 6 away from 3,700. Let's get there guys. If you're not subscribed to the channel, what are you waiting for? It's always a fan channel for all to see. यहाँ पर हम कल क्रिकेट भी करने वाले, remember this is what it is भाई, 13 seconds goal, wow. City will not only defeat United, they might even humiliate United. It's basically जो रूनी ने बोला था for City against, अरे एक और गोल आ गया, अरे मैं बच गया, what a free kick man, De Bruyne is like next level, and Rodri, what a ball from De Bruyne, और यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस इज स्लीपिंग नियर पोस्ट में, गिविंग रॉड्री अ फ्री हेडर फॉर रियल, एब्सोल्युटली नट्स, पैथेटिक, ड्रीमिंग भाई कर रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस, कर क्या रहे भाई, डे ड्रीमिंग, व्हाट आर दे ब्लडी डूइंग, सीरियसली मैन। एज मच एज मैं तो भाई न्यूट्रल हूं, फिर भी यार मैं चाहता हूं एक अच्छा मैच यार, गिव सम फाइट मैनचेस्टर यूनाइटेड, कम ऑन मैन यूनाइटेड क्या कर रहे, एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट मैन, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। और बाय द वे यहाँ पर सब लोग बोले भाई मेरे ऑडियो में मेरा ऑडियो कम आता है क्या, आज पता नहीं बहुत ही अजीब सा कमेंट आया मेरे एक वीडियो में। एक तो भाई 9,000 में से एबीएफसी में से भी यहाँ पर देख 900 लोग भी नहीं देखते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द 900 पीपल हु वॉच, मच लव फॉर देम एंड यू गाइस नो इट, बट भाई उसमें भी हेट कमेंट्स आते हैं, उसमें भी क्रिटिसिज्म आते हैं भाई, इतना आई नो फीडबैक इज टेकन, लेकिन कोई लोग बोल रहे हो यहाँ तो लोग मुझे बोलते हैं, मैं तो चिल्लाता हूँ काफी, बहुत नॉइज आता है। कोई बोल रहा था मुझे माइक में नॉइज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही इनफ, कम आती है मेरी आवाज, पता नहीं कुछ तो बोल रहे तो पता नहीं, और वैसे ही मैं बोला भाई पीपल ड्रॉपिंग, वाओ। एनीवे कोई नहीं, एग्जैक्ट टाइमिंग देखेंगे यार, विल टेक अ लुक इन द रिव्यू, विल प्रॉब्ली गेट एन एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफिशियली, बट अगेन मैं यहाँ पर देखूँ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 मिनट दिखा रहा है इसमें, तो एक सेकेंड मैं ट्राई कर, एनीवे आई विल फिगर इट आउट अभिषेक फॉर यू इफ यू वांट इट। 1 आवर फुल टाइम होगा बोल रहे मुदित भाई, मुदित दाऊद बिग अप, मुदित क्या हाल है भाई। चेल्सी नेक्स्ट सीजन फुल ऑफ यंग प्लेयर्स कमिंग टू हिट एवरी टीम, यप लेकिन खाली यंगस्टर से नहीं होता कुछ भी, वी आर नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ 1999 टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक रोड्री शुड हैव आइडियली स्कोर्ड देयर, और यहाँ पर एक और शॉट, व्हाई आर दे लेटिंग दोस शॉट्स, ग्रिलिश विद अ शॉट, इज इट अ कॉर्नर, रबिश, बैड शॉट, कोई नहीं, यप लुक्स लाइक इट, गौरव तो बोल रहे वन साइडेड, अभी तक तो पूरा वन साइड लग रहा है यार भाई, दिस इज लुकिंग इवन वर्स देन मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स इन द सीजन जो था अगेंस्ट ब्राइटन, एंड इट वाज प्रीटी बैड, रिमेंबर दैट। अभिनव नो प्रॉब्लम ब्रो। हाँ डेरिन बोल रहे हैं आज टाइम का बारिश होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है भाई, बिग अप टू डेरिन यार फॉर ऑलवेज डूइंग दैट बाय द वे, मोर और लेस। अंकित भाई क्या होता है ना, स्ट्रीम का एंडिंग और मिड में 1 to 2 मिनट के लिए ऑडियो कम होता है, उसका बाद वापस परफेक्ट होता है, बस ओनली फॉर 1 2 मिनट्स, ओके। पता नहीं यार, मतलब मैं आई हियर अ लॉट ऑफ टाइम्स माई सेल्फ एज वेल, जस्ट टू काइंड ऑफ चेक माई ऑडियो वीडियो एंड एवरीथिंग, जस्ट जनरल क्वालिटी व्हाट आई कैन इंप्रूव ऑन, नॉट ऑलवेज लाइक मोर और लेस ऑलवेज, तो वहां पर आई डिडंट फील दैट, तो आई वाज लाइक लिटिल सरप्राइज्ड बाय दैट, बट एनीवे मे बी वी नीड टू अपग्रेड दिस एंड होपफुली विल अपग्रेड आवर सेटअप एज वेल, maybe if we get to 10K year as well, and ABFC, come on let's get there, सीजन एंड है नहीं हुआ अभी तक, अनूप बोल रहे भाई, अनूप व्हाट्सअप अंकित भाई आज आपका ट्वीट ने नहीं यार बिल्कुल भाई, सम रबिश मैन, एज मच एज भाई यहाँ पर लोग सब लोग है ना, सम रबिश गाय, एब्सोल्युटली रबिश गाय इन मैड्रिड जोन और ब्लडी, अगेन बिग अप टू रियल मैड्रिड यार, नथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन वो ट्वीट अकाउंट है ना, पैथेटिक ब्रो, एब्सोल्युटली सेंसलेस गाय, सम सेंसलेस गाय, मैं बहुत ही वर्कअप हो गया यार, बोल रहे हैं काई हावर्ट्स इज नॉट 100% श्योर ऑफ द चेल्सी प्रोजेक्ट, घंटा मैन,
Ghanta not, not convinced. As much as Kai Havertz deserves a lot of, criticism this season ke liye, bhai, let's be real. You cannot make up the some bulla stories like that. I'm really worked up. Sorry guys for that thing. And then you exactly know what I'm saying. Absolutely shit stuff, bro. यहाँ पर रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड तो काय हैवर्ट्स इंटरेस्टेड नहीं मतलब व्हाट रबिश इज दिस इन चेल्सी absolutely rubbish that was. Why? If anyone knows, he works like a donkey. But yes, that's his criticism as well. That's the criticism I would give that for sure. दिया यार सही बोला, बोलो ना अंकित भाई, केपा दिया दोनों नहीं. David Dia eventually change करना है, but I don't think that's a भाई short है एक second. Manchester United with a little bit of a thing. As much as Dia होता है यार, एक build up होता है. They cannot kind of keep the ball because of the distribution of Dia, bad distribution Dia वो है. लेकिन David Dia is not the sole reason. It's about the entire Manchester United squad, bro. मतलब बहुत बार मैं सोचता हूँ भाई, really मतलब people might think I do not know football, but I seriously believe David Dia, as much as वो criticism भी लेना चाहता है, मतलब देना पड़ेगा उसको थोड़ा बहुत. I don't think he's the sole reason why sometimes Manchester United do not do well as a team. I think he's one of the reasons for sure. They can not the sole reason. कहीं ना कहीं I think they need an upgrade in places, especially I would say right back में. As much as Van Bissaka अच्छा रहा है season, I still feel Dalot and Van Bissaka are not that level जहाँ पर Manchester United होना चाहती is what I'm guessing. That's my take on that. क्योंकि when you talk about distribution, you need to have one clear outlet. जो if people know, Branislav Ivanovic was one of the best outlets that was there in the English game. That's how good he was. I think he would to make sure कि हमेशा byline पे रहे, wide रहे. Thibaut Courtois या Petr Cech एक shot, both left footers used to put at Branislav Ivanovic. Brilliant stuff. As much as लोग बोलते थे Petr Cech is not about distribution, do watch the Chelsea games. But anyway, distribution. Man City scored. Ashish, yes bro. Morning आशीष, क्या बात है, उठ गए. बिग अप यार, क्या हाल है, मजाक कर रहा था, पर कोई नहीं भाई. चैलेंज हो रहा है फ्रेड का, लेकिन फ्रेड कुछ कर नहीं रहे जो आज आए इनटू द टीम. एंड रिमेंबर ब्रूनो इज प्लेइंग वाइडिश Aaron Wan Bissaka with some defensive work, लेकिन giving it back to City. Let's focus on the game, guys. Absolutely Darren. Stones with a Hollywood pass, brilliant pass at that, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाए केविन डे ब्रुयना, the guy who's been sensational, along with Gundogan. अरे ड्रीम टीम इन द हाउस ब्रो, व्हाट्स अप, नाइस टू सी यू ड्रीम टीम. अगेन आप अगर नए सब्सक्राइब कियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू नो व्हेनेवर वी आर लाइव और ब्रिंग अ न्यू वीडियो. साथ साथ में अरे वाचिंग फ्रॉम नेपाल, बिग अप यार, बिग अप. लेकिन हाँ, हमारा मेन चैनल भी है ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, वो चेकआउट करिए. दोनों में यहाँ पर हम क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स भी करते हैं, मेनली क्रिकेट एंड फुटबॉल. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में हम करते हैं 100% फुटबॉल एंड टू एंड. आई एम अ चेल्सी, अ मिलान फैन एज वेल एज इंडियन फुटबॉल फैन, बट मैं बोलूंगा that we kind of cover almost everything that you can think about in modern day popular football. Prime Ivanovic attacking wise was one of the most attacking right back in Premiership history. नहीं, I don't think it's unpopular, bro. I think Zabaleta or Ivanovic have definitely got that thing. Ivanovic का plus point वही था, like a Trent versus a Reece James in today's day जो होता है ना conversation, और Kyle Walker, अगर तीनों बोलोगे ना तो Kyle Walker does both the things, defense and attack very good, same as Reece James. लेकिन Reece James is like a proper fullback, wingback. Kyle Walker is turned into a centre back. Ivanovic versus a Zabaleta versus a Gary Neville, मैं बोलूंगा that Gary Neville was better in crossing and defense versus the other things, whereas Ivanovic was good in everything in my opinion. The prime Ivanovic was next level in my opinion. I realized I was too harsh on Mariano. भाई देखिए यार, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अनूप. देखिए भाई, वाओ, 3 people watching us. Wow man, much love for the 3 people watching us, bro. 7 people हो गया, चलो, nice man, from a family of 3,700. We'll have more people. Hopefully we'll have more people for sure. Pretty sure we deserve more. 100% we do. हम भी जानते हैं भाई, नहीं हम तो घंटा जानते हैं यार, that is there. But Casemiro getting a free kick यहाँ पर, I guess Grealish, I told you Grealish, Casemiro और Fernandes will have some challenges. भाई वी हैव अ न्यू पर्सन ऑन. अनूप, मैं आऊंगा आपके कमेंट्स पर भी, एंड लेट्स गेट टू दोस लाइक्स क्विकली. सौरदीप इन द हाउस, बहुत दिन हो गया. सौरदीप क्या हाल है भाई, छुट्टी पर थे, बहुत दिन हो गए भाई. सौरदीप हैज स्टूड सेकंड इन एन एफपीएल कॉन्टेस्ट इन द ईयर.
Big up to Saurabh for that. Absolutely. Again, first वाला को prize मिल सकता है if we get to 10K on ABFC and 5K on Almighty Sports in this summer. And that was the key जो मैंने हमेशा बोला है. But prediction league भाई for members is on and उसका announcement होगा. Definitely in a week or so मैं करूंगा as soon as the season is over, which is after the Champions League on ABFC, so people missed out. And yes, Keshav is a member. Talk about members bhai on Almighty Sports Pay. So welcome Keshav bhai, welcome to the fam. Keshav, केशव आप किसको सपोर्ट करते हो? जस्ट रिमाइंड मी. एंड ऑफ कोर्स केशव, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और बोथ, कंसिडर डूइंग दैट भाई. नीचे इन द डिस्क्रिप्शन, एवरी डिस्क्रिप्शन हैज माय लिंक्स. और मैं आपको ऐड करूंगा टू आर एबीएफसी ऑलमाइटी ब्लूज का जो मेंबर्स ग्रुप है, एज वेल एज ऑलमाइटी स्पोर्ट्स का ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम और बोथ. तो वहां पर वील हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस. एंड मे बी अगर आप ऑलमाइटी स्टैन और यू नो on the other channel Almighty Goat होते हैं, तो you have a chance even to kind of be part of the member streams as well going forward. बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे. नया मेंबर भी आया है. यस 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 केशव को बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए भाई. यहाँ पर बढ़िया शॉट लेकिन नॉट इनफ. मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकम बेटर लास्ट 5 मिनट्स में. थोड़ा सा आई थिंक दे हैव कम बैक इनटू द गेम. शुरू बहुत ही नर्वसली किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने. आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट यू वुड नॉट एंटिसिपेट नोइंग मैन सिटी जो कर रही है सीजन, स्पेशली इन बिग कप गेम्स. बट या अगेन अभी देखते हैं हाउ विल दे कम बैक. विल दे बी एबल टू कीप अ क्लीन शीट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टिल द हाफ टाइम. ऑब्वियसली क्लीन शीट तो नहीं है क्योंकि एक गोल हो गया थैंक्स टू गुंडोगन इन व्हाट 13 सेकंड. वाओ. बट यहाँ पर विनिंग द बॉल इन मिडफील्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अगेन लूजिंग इट. भाई एरिक्सन अगेन क्या बोलोगे सेकेंड हाफ में? इफ दे डोंट गेट अ गोल अर्ली ऑन, मे बी एरिक्सन को लेना पड़े बाहर, और मे बी दे माइट हैव टू पुट आउट वेगॉर्स्ट, who might bring a little bit more physicality as well as एक striking ability. Just saying, as much as उनको एक playmaker भी चाहिए. और maybe Fred goes off and Eriksen goes in the playmaker spot, जो करते ही है. Sancho finally on the ball but not doing enough. एक्चुअली बहुत ही नैरो हो रहा है. तो क्या हो रहा है? बैटल ऑफ द मिडफील्ड हो रहा है जो हम एंटिसिपेट भी किए थे, 4 वर्सेस 4. तो इट्स लाइक अ स्टॉप स्टार्ट इन द लास्ट 2-3 मिनट्स. हाँ, केशव इज आर्सेनल फैन. आप आर्सेनल फैन और हैदराबाद फैन ऑन IPL, remember? Correct me if I'm wrong. Arey bro, Clifford man, again man, shout out to Clifford. Bhai, shout out to every member here. I know that there are as much as we might not get basically the viral following that probably we deserve, and let's be real, we do. As much as people might think I might brag about myself, but it's not about myself, it's about you guys, my almighty fam. But साथ साथ में जो लोग सपोर्ट करते हैं भाई, you guys know and exactly what we know, and हम भी थोड़ा बहुत जानते, घंटा नहीं जानते, हम थोड़ा बहुत जानते. लेकिन Clifford especially bro, भाई this guy along with Darren, Pudin, Sport Freak, by the a lot of them, we talk football as well. Arsene Wenger, I remember Aloknath, by they've been gifting memberships as well, either udhar. So by big up to Clifford, and of course being a member on Almighty Sports, not just Almighty Blues. यहाँ पर गौरव बिग अप यार, क्या हाल है भाई? वेलकम. यस एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर याद रखिए भाई, कल हम क्रिकेट का भी करने वाले. यस, WTC फाइनल इज ऑन एंड यहाँ करने वाले. आज रात को हम चेल्सी के बारे में बात करने वाले डिटेल में. वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन द हाउस, तो वहां पर आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. 10:30, डू नॉट फॉरगेट. वहां पर यू कैन हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. बट फ्रेड चैलेंज देते हुए बट नॉट डूइंग वेल. ही इज लूजिंग फाउल्स यार, गिविंग अवे फाउल्स रादर. प्रेस करो और सिटी को डोंट लेट देम पोजीशन. यार ट्राई तो कर रहे हैं गौरव, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैटल ऑफ द मिडफील्ड ना कहीं कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को. हाँ, इट्स बेटर देन एटलीस्ट नॉट कंसीडिंग और गिविंग अवे फ्री किक्स इज ओके. लेकिन आई जेन्युइनली बिलीव ना, जो रॉड्री को बॉल मिला था ना, वेयर इट वाज अ बिग चांस, अगर वो फ्री किक्स देते रहे ना, आई वोंट बी सरप्राइज्ड दैट डी ब्रुयना गेट्स वन ऑफ दोस सुपर्ब डिलीवरीज एंड इट्स अ गोल अगेन ऑन सेट पीस. क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीजन लिंडलॉफ हैजंट स्टार्टेड एज वेल एज जो किया है जनरली सीजन में. नाइस बॉल, गोल लगे ऑलमोस्ट. नहीं यार, हालैंड पैर दिया, लेकिन व्हाट अ बॉल फ्रॉम गुंडोगन. भाई वापस से बोलता हूं, आई लव कोवाचिच, but is anyone here agreeing that Kovacic is better than Gundogan? I don't think so. As much as Gundogan might be 32-year-old, I think 3 years older than Kovacic. That doesn't matter. Gundogan is next level, bro. How can City get rid of Gundogan? मुझे नहीं लगता realistic लग रहा है भाई. I don't think so. And why would Gundogan leave, with all due respect to Barca and Arsenal? यार, I'm just surprised. He's winning stuff. I think the City side is at least winning one, if not more, trophies next season as well. Remember that. कांटे वेराटी एंजो भाई, लेट्स ड्रीम करने में कहीं तो जाता होगा गौरव.
भाई वैरायटी नहीं आने वाले पीएसजी में एक ही सीजन में, यू नॉट लूज ऑल द स्टार्स ब्रो, इट्स नॉट गोना हैपन एज मच एज ही इज वेरी मच इंजरी प्रोन एज वेल. Ashes cover bhai dekhte, we'll look at it for sure. There will be content. It's about how much content we do on that. हर एक major series we cover bro. Darren, you know that very well, my almighty fam. Pavard and Hernandez leaving extremely sad. Thought we would build a Hernandez statue, but he snitched. I think इवेंचुअली मुझे लगा था दैट ही माइट मूव ऑन एनीवे. लुकास हर्नांडेज मुझे नहीं लग रहा था दैट ही इज लाइक अ बाय इन काइंड ऑफ अ प्लेयर एज मच एज आप बोलोगे दैट ही वाज कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट फॉर डेविड अलाबा, someone who could play center back as well as left back, but I really never felt that way यार मुझे honestly speaking just as a neutral. लेकिन हाँ पवार्ड कहाँ जाएगा वो इंटरेस्टिंग है. पवार्ड आई बिलीव आर्सेनल भी लिंक हुए थोड़ा बहुत along with Barcelona again. But where would he go? As in potentially a team which requires a center back, right back. I don't know. आप बोलिए मुझे where would he go? अरे Evolution Gaming Lux as well यार, not just on ABFC, member here as well. Big up to Evolution Gaming Lux, absolutely. Much love bro. क्या हाल है सब लोग. अगेन जो भी लोग जुड़ रहे, अगर आप लोग ऑलरेडी हो ABFC मेंबर्स ग्रुप में, ग्रेट. बट अगेन वहां पर भी कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन. द आइडिया इज अबाउट इंटरेक्शन एज वेल एज taking a lot of feedback at the same time, potentially developing some times for meetups and maybe member streams etc. लेकिन हाँ आप अगर नहीं हो तो मुझे डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम और ट्विटर. यहाँ पर मैन सिटी ने जीत लिया वापस बॉल इन मिडफील्ड, और वहां पर हालैंड क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या हो गया? क्लिफर्ड और पापियो. कोई नहीं कभी कभी बोलते ना भाई इंसान प्यार का भूखा है. बहुत ये फिलोसॉफिकल हो रहा आज कहीं ना कहीं. इट्स ऑलवेज गुड ब्रो. आई एटलीस्ट लाइक इट यार. कोई बेसिकली अच्छे से बोलता है लेकिन आई नो यू आर जस्ट जोकिंग ब्रो. बिल्कुल बिल्कुल कल उसका ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं भाई, ड्रीम टीम. कल हम WTC फाइनली बात करने वाले. कल और परसों मे बी इन द नेक्स्ट 3 days यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 लाइव स्ट्रीम्स ऑन WTC. प्रॉमिस है मेरा, ठीक है. 4 तारीख और 6 तारीख को यू वुड एक्सपेक्ट WTC स्ट्रीम्स, ड्रीम टीम एंड एवरीवन हियर. याद रखिए. कैन केन कम टू रियल, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? नहीं लग रहा मुझे, जैसे हमने किया ही था भाई. यहाँ पर देखो वरान चिपक रहे हालैंड हालैंड से एकदम. But coming back to the comment, I think Benzema is going to stay. Looks like it. I think आज एंचेलोटी ने बोला है नहीं इंटरनेट टॉक है सब, तो लग रहा है एक और साल रहने वाले बेंजेमा वहाँ. भाई अगर बेंजेमा वहाँ है तो केन क्या ही तो करेंगे अभी जाकर यार. मच एज रियल मैड्रिड ट्रॉफी जीतेगी जस्ट लाइक अ मैन सिटी, वी नो द एंड बार्सिलोना, आई डोंट थिंक दैट ये होने वाला है दैट केन विल बी सेकंड फिडल यार. ही इज नॉट माइकल ओवन येट. माइकल ओवन जब गए थे he probably went a little bit later. Evolution Gaming Lux, obviously City fan saying भाई Evolution Gaming Lux, by as much as I like the fact that you are, putting a challenge to Manchester United जो dominate की है बहुत सालों तक English football over the years, unless आप बोलोगे नहीं recently others are, but आप कुछ ज्यादा dominate नहीं कर रहे. आप देखो ये भी है. I know कहीं ना कहीं you got to hit the rod when it's hot वाला चीज है ना. Man City would like to basically win a treble, and our Manchester United it will be feel like crazy bro. But Haaland with a shot. Nice turn, but just over the bar, I believe. नहीं कोई नहीं. अरे man, Darren, we'll probably do such a meetup as well, but that meetup will be on a major occasion, something like जब हम 50K reach हो जाए भाई, something like that, Darren. Unless you are making a trip to my place, or I'm making a trip to your place, or anyone there, absolutely. Like that's something that we'll be definitely considering for sure. And yes, let's get to 50 likes. Talk about 50K, bro. Let's get to 50 likes quickly, भाई. चलो 50 लाइक तो बनते ही है. और यहाँ पर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक डेविड डिया, इंटरेस्टिंग, वाओ इंटरेस्टिंग स्टफ. डेविड डिया भाई प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक. लेकिन विल सिटी प्रेस? डेविड डिया वापस बॉल लेते हुए भाई. अगेन नॉट अ स्टैट्समैन Clifford, but I certainly remember that Manchester United Bayern Munich is something that you don't forget, because these have been quite recent. Of course, Inter Milan as well, if I remember right? Even they did the treble, pretty sure. So Inter Milan, I remember. Bayern Munich, I remember Manchester United. These are the 3 teams that I remember. Pretty sure Barca, Real Madrid will be there. Of course, Barca तो I remember as well for sure. लेकिन हाँ तो ये 4-5 टीम्स तो आई रिमेम्बर लाइक फॉर श्योर. लेकिन हाँ
Maybe कहीं ना कहीं you would say that Juventus probably should have done that क्योंकि at one point Juventus की टीम बहुत अच्छी थी but they were Milan of course, yeah, how can I forget my Milan, how can I forget that Clifford, लेकिन हाँ तो ये 5-6 टीम्स को छोड़कर I think Juventus probably deserved one, rather they missed out the opportunity. Kevin De Bruyne winning the ball और यहाँ पर brilliant turn लेकिन well blocked by Manchester United. Fred clearing it finally, giving it to Aaron Wan-Bissaka जो राइट साइड खेल रहे हैं हवा में और वहां पर कुछ किया नहीं है. नाइस प्रेसिंग फ्रॉम रैशफोर्ड दो जो दिखे नहीं अभी तक मैच में, बट डियाज डूइंग द थिंग, विनिंग अ गोल किक. ड्रीम टीम यस, हमारा वीडियो चेकआउट करिए भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो था, हमने लाइव किया था विद अ ग्रेट गेस्ट यार ऑन ऑलमाइटी ब्लूज. अगेन हमारा मेन चैनल है, आप वहां पर हमने लाइव स्ट्रीम की थी, डिस्कस किया था उसके बारे में, मेसी के बारे में एंड अ लॉट मोर बारसा टॉक्स एज वेल. तो आप चेक करिए. बाय द वे यस आई कवर और रादर वी ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल ब्रो इन स्पोर्ट्स. आप जानते ही एंड टू एंड people who are regular. I don't know why I want to keep Kai for one more season and see him under Poch. I don't know why I like him so much. भाई देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं डिसअपॉइंटेड तो हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी काफी गाली दी है रिसेंटली, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो एंड ये चीज मैं आने वाला, अनूप ने मैसेज किया था ना, अनूप जो अपने रियल मैड्रिड फैन है, भाई देखिए बिग अप टू रियल मैड्रिड टू बी इंटरेस्टेड एंड आई नो ही डजंट डिजर्व एज मच एज व्हाट इज बीइंग कोटेड फॉर. मुझे लगता है वो सब अफवाह है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, लेकिन वो इंटरेस्टेड तो काफी थी. इनफैक्ट पीपल डू नॉट नो Kai Havertz पर they were interested even when Chelsea went for Kai Havertz. In fact, Chelsea beat Real Madrid to Kai Havertz signature and that's a fact people, as much as you would not like to believe it. ठीक है, तो वो एक चीज अचीवमेंट था मेरे लिए क्योंकि Kai Havertz was supposed to be the next Ballon d'Or candidate in the future वाला चीज, इतना अच्छा यंगस्टर था Bayer Leverkusen. मेरा ये ओपिनियन स्ट्रांगली मैं बोलता हूँ दैट पीपल मौका रहे. नाइस ग्लांस हेडर यार, एक सेकंड क्रॉस आया लेकिन नॉट डूइंग इनफ. रैशफोर्ड भाई ग्लांस हेडर था बट गोइंग फॉर अ गोल किक. नाइस मूवमेंट बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. एक सेकंड आता हूँ. कैसेमीरो एंड रैशफोर्ड कनेक्शन ब्रो ऑलमोस्ट, बट कोई नहीं. बट कमिंग बैक टू यार देखिए, मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड विद फेलो कंटेंट क्रिएटर्स एज मच एज आई लव द कम्युनिटी, नो वन इन पर्टिकुलर बट जनरली. But people have made jokes out of Kai Havertz, and sometimes I agree that sometimes light भी रहना चाहिए हमें को, हमको करना चाहिए. लेकिन I think he's a youngster at the end of the day. He's someone who's not played in this position at the end of the day. Yes, he's not done enough in whatever position he's playing. उसको better application implement करना है. But फिर भी मैं बोलता हूँ that there are so many times मुझे लगता है in a creative sense he is not bad at all. It is just that the finishing ability is terrible. That's the difference. And kabhi kabhi it feels like he's just running around like a donkey. But sometimes that same cheese can be useful when you actually want that person who just does the donkey work. That thing is something which is required. So I think you can use him in a way that you might suit your team. So he's more like a squad player. Bottom line ये है. और content creators and generally जो social media में है ना, बहुत ही ज्यादा hate दे रहे हैं यार. मतलब Kai Havertz is not as bad as he's made out to be, as much as he's very bad. In my personal opinion, or he's just not the. देखिए with all due respect to all the neutral fans यार, it's just not the UCL final. And so incorrect है बोलना कि यार UCL final पे जी रहा है. That's so incorrect. You really have not watched enough of Chelsea games, with all due respect. That directly बोलता हूँ. As much as he's again बहुत गंदा किया है इस सीजन में, एंड इनफैक्ट लास्ट 1.5 सीजन में मैं बोलता हूँ. भाई गुंडोगन का गोल वापस दिखा रहे. व्हाट अ गोल ब्रो. भाई 25 मिनट हो गए हैं. इज इट अ वाटर ब्रेक? ये क्या हो रहा है? एनीवे, प्रेडेटर गेमिंग व्हाट्स अप क्या हाल है भाई? प्रेडेटर गेमिंग ऑलवेज सपोर्टिंग द चैनल एज वेल. मैंने सोचा स्टिकर डालूं लेकिन दूसरा चैनल पे स्ट्रीम कर रहे हैं आप. हाँ ये क्या? हाँ वी आर स्ट्रीमिंग ऑन द सेकंड चैनल एज वेल. हाँ एवोल्यूशन गेमिंग लक्स, कोई नहीं, बट वेलकम टू द फैम यार. यहाँ पर आई थिंक देयर आर सुपर स्टिकर्स ब्रो, देयर आर सुपर स्टिकर्स एज वेल यहाँ पर. Definitely there are. If you want to, that is. Again, you can definitely, go for super stickers. होने चाहिए यार. There should be access to super stickers. There should be access to basically emojis. यहाँ पर अभी cricket emojis डाला है मैंने. I probably should have added one for this match, but कोई नहीं. Swiss goalkeeper, which club? तो अच्छा, you're telling about Sommer. I think, yeah, that's a good call. Why, Chelsea fans? Why aren't Chelsea going for Jan Sommer? Big question. Is he not so good in distribution and shot stopping जो हमें चाहिए level in terms of upgrade to Kepa? I think he is better than Kepa for sure. That's actually a good call. I think हमने बहुत बार बोला है Navas. It's actually a कहीं ना कहीं not a bad signing for a year or so. लेकिन I think Jan Sommer can be a good one. But अभी तक लिंक तो काफी नहीं हुआ यार. मुदित, if you're still watching, do let me know. Bayern Munich fan अपने. Or are you talking about Kobel, who's also in the Bundesliga by the way? Just checked.
Trebles Barca, Bayern, Ajax, PSV, Man Utd, Inter and Celtic in 6-7. Okay, so basically AC Milan का नहीं है क्या भाई साहब? What rubbish, man. I thought AC Milan would have it. Clifford. Okay, maybe I'm wrong. Again, not a chartsman, bro. I don't have pictographic memory, but Barca का तो definitely I remember, Bayern का I remember, Man United का I remember, Inter का I remember. These photo I was 100% sure, but big up. इस गाय गुड बैकअप फॉर बेंजो नहीं तो बेसिकली क्या है ना लोग बोल रहे ब्राहिम डियाज होंगे बैकअप फॉर असेंसियो लेकिन आज एंचेलोटी ने बोला है फॉर पीपल हु आर वांटिंग दिस न्यूज दैट ब्राहिम डियाज नो कमेंट्स अभी अभी तक ये है तो मे बी दैट मीन्स असेंसियो हु कुड प्ले लाइक अ कैम राइट विंगर एज वेल एज अ स्ट्राइकर अ फॉल्स नाइन Kai Havertz is actually nice shot एक सेकंड ओहो केविन डी ब्रुयने लेफ्ट फुटेड शॉट यार जस्ट पास द गोल पोस्ट भाई साहब लग रहा है मैन सिटी का एक और गोल आ रहा है एक गट फील आ रही है भाई ब्रिलियंट शॉट दैट भाई शिफ्ट ऑफ द फुटबॉल ब्रो द शिफ्ट ऑफ द फुटबॉल जो करता है ना फ्रॉम राइट फुट टू लेफ्ट फुट द वे ही डज इट एब्सोल्युटली इन द स्लॉट जो मिलता है भाई दैट इज सेंसेशनल जो चीज के लिए भाई एक चीज के लिए मैं जोसे मोरिन्हो से हमेशा गुस्सा रहूंगा यार दैट शिफ्ट ऑफ द बॉल एंड दैट डिलीवरी ब्रो दैट ही हैज केविन डी ब्रुयने नेक्स्ट लेवल बहुत फ्यू इन द बहुत कम इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम हैव डन इट बट रैशफोर्ड को एक मिला है एक ब्रेक यार लुक्स लाइक इट एक सेकंड आ रहा है वापस कमेंट पर एक सेकंड दीजिए मुझे एरन वैन-बिसाका ऑन राइट हैंड साइड लेकिन सिटी कवरिंग वेल चलो तो हाँ तो आई थिंक Kai Havertz I actually believe people might give me hate and laugh at me but I actually believe and I genuinely believe Kai Havertz is a upgrade on Asensio discuss I think he is yes probably not at जो 70 million pounds or rather 75 million euros जो बात हो रही है definitely not but maybe at around 50 million it's worth it yeah for Real Madrid just saying as much as मैं चाहता हूँ Kai Havertz को एक चांस दिया जाए as a number 10 more of a squad player and he has to prove himself ये भी है क्योंकि considering कि Mason Mount is almost leaving one of the two definitely needs to stay if not both मैं तो बोलता हूँ but कोई नहीं Ariola हाँ एरियोला भी है मतलब काफी बात हो रही है आई थिंक बुनू यान सॉमर और नवाज टाइप ऑफ प्लेयर मुझे ज्यादा चाहिए होगा सच में बोलो तो गौरव Kai is a talented player but our Chelsea team aren't using him currently I 100% agree with that लेकिन again he has to also improve Jan Sommer is the best pick of Chelsea if Chelsea goes Kai Havertz is big game mentality too अगर मैं होता तो second pen नहीं लेता against BVB exactly very good point Sommer reportedly wants to play UCL or at least Europa हाँ वही है अगेन वही है Sommer और बुनू वो सब ना they will move because they've been there you know for a reason because of winning trophies so I don't think they'll move unless they have Europe I hear you Mudit Pedri next Busquets if not Messi हाँ नहीं यार नेक्स्ट बुस्केट्स तो नहीं उसके बारे में हमने बात किया ड्रीम टीम दैट्स द स्ट्रीम में बोल रहा हूँ एक सेकंड वीआर कॉल चलो भाई घंटा होने क्या वाला है इज इट अ रेड कार्ड कॉल इज इट अ रेड कार्ड कॉल हुआ क्या है पॉल टियनी द रेफरी लुकिंग एट द मॉनिटर एक सेकंड ये एंगल क्लियर नहीं है व्हाट इज दिस एंगल शोइंग अनलेस यार वैन बिसा के टार्ट पे लगी है इट्स ओवर द टॉप वाला बॉल नो दिस नथिंग एज मच एज मैं चाहता हूं मैच इंटरेस्टिंग हो जाए 1-1 हो जाए नो डिसरेस्पेक्ट टू सिटी फैंस ब्रो लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट अ पेनल्टी ब्रो व्हाट What? It's not a penalty, bro. It's not a penalty, absolutely. और भाई साहब, robbery, यार. That's absolutely robbery. That is not a penalty. As much as Man City को बहुत penalties मिलते हैं, Manchester United do not get penalties this season. I know that. I think they've got only one penalty. That is not a penalty, bro. But it's given a penalty. It is absolutely a rubbish decision. Rubbish. रेफरी ब्रो एज मच एज हेट मिला है एंथनी टेलर को भाई ट्रस्ट मी दिस रेफरीज क्या फूक कर आते हैं यार I cannot believe it. Congratulations Manchester United fans. I am just being neutral and being honest. Jack Grealish had no clue about Aaron Wan-Bissaka. He was airborne, थोड़ा सा touch हुआ है but I couldn't see that. Definitely broad daylight robbery for Manchester City. As much as you would say that maybe they're just trying to make it interesting, Bruno Fernandes, bro, it's a nonsense decision. Grealish, very unlucky.
Robbery, bro. बिल्कुल बिल्कुल भाई. Let's have some spam in the chat भाई for once. Absolutely. लेकिन will Ortega be the man? Remember Ortega, it is a not Edison. No spoilers यहाँ पर भाई. Bruno Fernandes taking a penalty. You know his run up. भाई गोल 1-1 हो गया. Game on, bro. It's going to extra time or what? अरे भाई मैन सिटी फैंस कमिसरेशन ब्रो, यू गाइस डिडंट डिजर्व इट. लेकिन एम आई अनहैप्पी? नो, मैं अनहैप्पी नहीं हूं. मैं न्यूट्रल हूं. मैं चाहता हूं अपना सैटरडे इवनिंग मस्ती से एक अच्छा मैच देखने को. एक सेकेंड, क्या हुआ? क्या हुआ? वापस से कुछ हुआ है क्या? वापस से लेना है क्या पेनल्टी कि कुछ लड़ाई हुई है? ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा जाकर मैन सिटी फैन को दिखाया यार. भाई व्हाट रबिश इज दैट यार? हैंडबॉल हुआ क्या यार? मतलब हाँ ही डिड दिस. चलो एक फाइनली एक एंगल दिखा. ग्रिलिश डिड दिस. उसके बाद की वैन बेसाका जीता है. इट वाज लिटरली अ टच ब्रो. एब्सोल्युटली रबिश. नॉट अ पेनल्टी. आई रिपीट इट. देयर वाज एन एल्बो. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एल्बो था. एंड आई नो इंटेंट मैटर्स एंड ऑल दैट रबिश यू कैन से. चलो ठीक है भाई, रियली ब्रो. एंड ग्रिलिश थोड़ा सा नाइव भी है. शुडंट हैव डन दिस unnecessary when he's already lost the ball. He shouldn't have done it. But it was just a touch यार. रॉबरी तो डेफिनेटली है, बट कोई नहीं. एज ए न्यूट्रल तो आई एम लाइकिंग इट भाई. I love it and I think I deserve it. Let's have a good match absolutely भाई. As much as City fans बहुत गुस्सा होंगे, I know that. अरे भाई भाई अगेन आई रिपीट, एल्बो था आफ्टर वैन बिसाका ने हेडर जीता. इट वाज अननेसेसरी बाय ग्रिलिश, बट इट इज नॉट अ पेनल्टी भाई. इट इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. यस इट वाज ब्लेटेंट बाय ग्रिलिश. अगेन बहुत ही नाइव था, बट इट इज नोवेयर क्लोज टू. भाई ऐसा है तो भाई किसी ने देखा है? हैरी मगवायर, लॉर्ड मगवायर ने एस्पिलिक्वेटा को भाई एक कुंफू टैकल किया था. एवरीवन रिमेंबर्स दैट? एनीवन रिमेंबर्स द किक दैट हैरी मगवायर had on Batshuayi? Anyone remember those? मतलब I don't know, but am I complaining? No. I love it and I think I deserve it as much as it's a daylight robbery. 1-1 in the house, bro. In the FA Cup final, Wembley is rocking. Wembley, bhai. Red smokes are up in the air. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट बिल्कुल बिल्कुल. वेरी अनलकी, आई एग्री. कहीं ना कहीं ग्रिलिश ऑल्सो वाज बहुत ही फूलिश यार. अननेसेसरी, टोटली अननेसेसरी. अगेन भाई सब लोग, व्हाई आरंट वी हिटिंग दैट लाइक बटन? लेट्स हिट दैट लाइक बटन भाई. प्रमोट करेगा स्ट्रीम को वो. गाइज इफ यू गाइज आर पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी फैम, व्हिच आई बिलीव यू गाइज आर, एवरीवन इन द हाउस भाई, लेट्स हिट दैट लाइक बटन. अगर आपने नहीं किया है, एक ठेंगा आपको जो दिख रहा है ना, वो आपको ठेंगा मुझे नहीं देना, आपको देना लाइक बटन. Doesn't cost a buck. Absolutely, you can go and become a member, put super sticker, super chats. लेकिन सबसे पहले भाई आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए. Hopefully to the community post, not just the stream. Absolutely, hopefully. Let's get to 50 likes quickly. We are not past 50 likes. Why? Let me know as well if you're not. But कोई नहीं, साफ दिख रहा है. ऐसे ही करना है तो यूनाइटेड को दे दे FA कप. नहीं, आई थिंक मतलब as much as Paul Tierney is at fault, I don't think FA कप जैसे कंपटीशन में बोलूंगा दैट इज अबाउट फिक्स्ड एक्सेट्रा. बट आई टोटली मैं भावनाओं को समझ रहा हूँ. रेवोल्यूशन गेमिंग लक्स, बीइंग अ सिटी फैन, इट्स एब्सोल्युटली डिलाइट रॉबरी. भाई सिटी मतलब फूला नहीं समा है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के चेहरे में. आप देख रहे हो टीवी पर. ना इकार्डीज एनर वेलेंसिया, नो. आपने बहुत बार सुना है मेरे से. आई वुड बी अ स्ट्रॉन्ग नो. जॉनथन डेविड, big time jury's out. Is he that level of player who gets us to the top 4? No again. Lukaku absolutely no. Kane absolutely yes, लेकिन आने नहीं वाला. रियशिक नहीं है. Fulkrug is a brilliant call, लेकिन वही है German strikers coming to Premier League. You all know what I feel about it now. Again Watkins is not the kind. अगर Watkins चाहिए तो I rather go big on Lautaro Martinez as much as वो realistic नहीं है. Vlahovic, Mitrovic are probably the better fits in my personal opinion. Arsenal, Chelsea, Liverpool fans are supporting which team? I think Liverpool will be supporting Man City यार. बहुत ही प्यार यार. बहुत क्लॉप और पेप के बीच में चलते रहता है भाई. As much as big respect to Liverpool, भाई चलते रहता है. और मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि वो दे शुड बी अ प्रॉपर राइवल्स यार, कंसीडरिंग जो हुआ है लास्ट 5-6 सालों में. बट फिर भी आई थिंक लिवरपूल फैंस आर नो टू वेज अबाउट दे विल बी सपोर्टिंग सिटी कहीं ना कहीं. But again, Liverpool fans are not like that to support a third team anyway, and that's something that I respect them for. Rizwan, poor refereeing has been a thing in England for God knows when, from God knows when, yeah. Absolutely.
आशीष तो बोल रहे सैड हो गया पेप। गौरव बोल रहे गो मैन यूनाइटेड। 100% रॉबरी यार, यार मैं यहाँ शुगर कोट भी नहीं करूंगा, 100% रॉबरी, 100% रॉबरी है सिटी के लिए। बट ऐसा भी बोलूंगा एवोल्यूशन गेमिंग, आई नो इट्स अ एफए कप फाइनल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, this can get you double. If you don't win this, then all of a sudden that Inter Milan games becomes a little bit nervous. लेकिन ये भी बोलूंगा that सच्चाई बोल रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट यू और सिटी फैंस टू सिटी, भाई सिटी डू गेट अ लॉट ऑफ 50-50 डिसीजंस देयर वे एज वेल। अगेन नॉट सेइंग इट्स फिक्स्ड, बट वो देखा है मैंने, कहीं ना कहीं दे डिजर्व इट एज वेल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चांसेस दे क्रिएट, एंड दैट्स समथिंग दैट दे प्रॉब्ली टेस्ट द रेफरी मोर, और कहीं ना कहीं रेफरी इज टेम्प्टेड टू गिव वन ऑफ मेनी। ब्रिलियंट क्रॉस बाय डी ब्रुयने ऑफ द कॉर्नर, लेकिन well cleared by Manchester United. We rather go all out and get world class striker or scout someone for, हाँ बीच वाला नहीं चाहिए एग्जैक्टली exactly. नहीं मित्रोविच आई थिंक कैन बी अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर डेरिन, लेकिन प्रॉब्लम है एटीट्यूड ऑफ द पिच एंड इज रेड कार्ड वाला चीज ना, वो एक इश्यू है। मित्रोविच इज एक्चुअली अ वेरी अंडररेटेड स्ट्राइकर इन माय ओपिनियन। एज अ लिवरपूल फैन आई एम सपोर्टिंग मैन सिटी, आई लव केडीबी। We need Colina back into the pitch. Bhai, let's sign a petition to get Colina back on the pitch. Sutapa Das, bhai, absolutely brilliant comment that. Absolutely, if you know, you know. Oh, Fred almost pressurized to a mistake in the box. मैन सिटी अब पूरा धावा बोल रही है यार, पूरा धावा बोल रही है प्रॉपर, जो 5 मिनट के लिए बीच में लगा था, 5-10 मिनट के लिए लगा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक इन द गेम। नहीं अगेन सागर रॉबरी है यार, मतलब अगेन रेस्पेक्ट टू योर व्यू यार, देखिए डेफिनेटली वो एक अननेसेसिटी था, ही डिड अ एल्बो 100%, और वो एयरबॉर्न था ना, टू टच बेसिकली लुक्स वर्स देन व्हाट इट इज। एक सेकंड, गोल आने वाला है क्या, पेनल्टी है, एक सेकंड, इज इट अ पेनल्टी फॉर मैनचेस्टर सिटी दिस टाइम? ब्रूनो फर्नांडिस ऑन, वाज इट केविन डी ब्रुयने और अर्लिंग हालैंड? एक सेकंड, आते हैं कमेंट पर, आते हैं सागर। देखिए बाय द लेटर ऑफ द लॉ ही डिड दिस, बट भाई अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मेरे अगेंस्ट वो दिया गया पेनल्टी, it'll be too much bro, I know कहीं ना कहीं he shouldn't have put his elbow, but he literally touched bro। उस समय ऐसा नहीं है कि इंटेंट हमेशा देखोगे आप, इंटेंट देखना पड़ता है जब यू पुट एन एल्बो टू इंजर द प्लेयर यार। आई डोंट थिंक यहाँ पर इंटेंट में देखूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। In my personal opinion, it definitely was intentional, Grealish का elbow, but he hardly touched Van Bissaka, और कहीं ना कहीं वो लकी था कि hardly touched it, और मैं बोल रहा था but slow motion में it looks worse than what it is सागर, that's the reality of it। और to for the referee to change the decision, I think definitely not a strong touch। If I have seen a lot of penalties not given, if this is given, God knows man, 100 penalties होंगे हर गेम में। एज मच एज ग्रिलिश की डेफिनेटली एक नाइव मोमेंट था वो, और नॉट अ पेनल्टी फॉर सिटी यार, डेफिनेटली रिप्ले देख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रेड जस्ट अबाउट गेटिंग हिज बॉडी इन फ्रंट ऑफ केविन डी ब्रुयने, इट वाज नॉट अ, या ही वाज काइंड ऑफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द बॉल। आई थिंक ये पेनल्टी नहीं होती फॉर सिटी, दिस वन इज नॉट अ रॉबरी। अभी अभी जो हुआ है, केविन डी ब्रुयने बेसिकली फॉलिंग डाउन। अगले साल चेल्सी बेस्ट करे ईपीएल में तो टॉप 4 इंटेंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, टॉप 4 ऐसे भी इंटेंस ही होता है यार हमेशा। वन ऑफ बस बायर्न 1920 और सिटी 22-23, आई गो विद बायर्न। देखिए 1920 थोड़ा कोविड साल था ना, वो मुझे तो वहां पर मैं बोलूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बायर्न, दे वर सेंसेशनल, डोंट गेट मी रॉन्ग। Of course, we lost to Bayern यार in the round of 16. Who can forget that? And how we lost, I remember, by Gnabry doing madness. लेकिन I would still say यार City 22-23, I think जस्ट नेक्स्ट लेवल लग रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। रिसेंसी बायस बोल लो या द फैक्ट दैट वो कोविड साल था, तो कहीं ना कहीं अनफेयर भी हो सकता है बायर्न पर, लेकिन आई थिंक 2 लेग टाइज में जो किया है सिटी ने, यू हैव टू गिव इट टू देम इन द चैंपियंस लीग एज वेल एज द लीग में किया, इन द प्रीमियर लीग बीइंग सो कम्पिटिटिव, टॉक अबाउट द टॉप 4 फाइट। और बायर्न रिमेंबर, मतलब एज मच एज दे वर ब्रिलियंट दैट सीजन, मैं बोलूंगा दैट they probably should have built more on that यार, कहीं ना कहीं they've gone backwards, would that be fair to say? If you made Pep scratch his head, तो खत्म, he will enter his beast mode। तो कार्लो एंचेलोटी के लिए आईब्रो, पेप के लिए स्क्रैच है क्या, बॉल्ड स्क्रैच। एक सेकंड, नाइस चैलेंज बाय सिटी, कॉर्नर मिला भाई। भाई क्या लग रहा है, रैशफोर्ड प्लेइंग सेंट्रली, इज इट वर्किंग? Probably it's working because of the strength he shows sometimes, जो people underestimate, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि रैशफोर्ड को एक आउटलेट जैसे यूज करिए, सेंट्रली आप ब्रूनो फर्नांडिस को खेलिए, इज व्हाट आई वुड से, दैट्स जस्ट मी। अच्छा हाँ, लाइप्जिग ब्रो, गोइंग फॉर लाइप्जिग ऑब्वियसली, एनकुंकू ब्रो, एनकुंकू शुड विन इट एंड कम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
लेकिन फ्रैंकफर्ट यार, कोलोमुआनी विल हैव हिज से. इट विल बी अ गुड मैच फॉर श्योर. डेरिन, कितने बजे डेरिन? आई माइट हैव मिस्ड इट, बट कितने बजे? आई होप इट्स नॉट एट द टाइम दैट वी आर स्ट्रीमिंग ब्रो. अरे गोल ऑलमोस्ट. What a miss by Manchester United to corner. Varane, he was free. Volley यार, just over the top, yes, beside the goal post. अरे beside the goal post. Nice glance by Casemiro यार, nice glance by Casemiro, I have to say. Brilliant stuff. By again, everyone watching, remember we are a fan channel for all to see. We are doing a watch along. If you're coming for attendance and supporting us just for the sake of it, also much love. But अगर साथ में देखें तो भाई better रहेगा कि आप देख रहे हो. I'm guessing if you're following football and generally sports, तो it's an FA Cup final, it's a historical day for a Manchester derby. First time FA Cup final हो रहा है. Neutral watch alongs, yes, but Manchester derby just about 25 years के लिए देखा हूँ. Just saying. As much as people बोले बुढ़ा हो, नहीं, 10 साल का था तब से शुरू किया मैं देखना फुटबॉल. But yeah, that is also late in my opinion. 11:30 है चलो, तो just by the time we end our stream on ABFC, maybe you will have that German Cup. हाँ, अगर let's be honest, as much as Leipzig Frankfurt is the German Cup final, आपका DFB Pokal, but still, you know, you would want your big uh, team there. With all due respect to Leipzig. अरे Bernardo Silva and Luke Shaw यार, bad tackle और late one. Bad नहीं बोलूंगा, late बोलूंगा. Again, they are showing the replay, guys. नहीं यार, जितने बार भी देख रहा हूं मुझे नहीं लगता पेनल्टी था. Again, David Beckham and I was बहुत happy, obviously for a reason, because he's a Manchester United legend and he is a legend. Legend वो ऐसे ही बोलते हैं. David Beckham is. अरे बिल्कुल ग्रेट यार. हाँ, चेल्सी मैच मैं देखा था 1999 में पहला लाइव, एंड विच आई ऑफन डिस्कस अबाउट. लेकिन हाँ, इंटरनेशनल फुटबॉल तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया था मेरे भाई. लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप्स एंड यूरोज एक्सेट्रा, राइट. बट हाँ भाई, अकांजी डिफेंडिंग एंड गिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड opportunity here for a throw in. It could be a deep throw from Van Bissaka. Let's see. अरे Ranajoy भाई, congratulations for the goal. लेकिन I still feel यार, somewhere down the line you were slightly lucky for that penalty यार. As much as by the letter of law Grealish did elbow him, I still feel यार, जो भी फुटबॉल खेला है, they'll be like daylight robbery. और ग्रिलिश को डांट मिलनी चाहिए. He was almost lucky, but he didn't turn out to be lucky. For them to change from VAR, I don't think it was clear and obvious for me. इतना नहीं था उसमें. Intent में देखता हूँ only when the person, you know, fouls for a, you know, injury challenge kind of thing. तभी मैं देखता हूँ इंटेंट. इसमें मैं इंटेंट नहीं देखता हूँ. हाँ, ब्लेटेंट आप बोल सकते हो, लेकिन टच नहीं किया यार, कहीं ना कहीं दैट, मतलब हार्डली टच किया, रादर पुट इट दैट वे. मैन डोंट नो, बट रेफरी डिसीजंस वर नॉट गुड, बट हु केयर्स. हर्ष तो बोल रहे हैं. वुल्सबर्ग लीडिंग 2-0 अगेंस्ट बारसा इन द वुमेन्स चैंपियनशिप फाइनल. अगेन आई एम टेलिंग यू, वुल्सबर्ग, PSG, Lyon, apart from Barcelona, these are the top 4 women's teams, if I'm not wrong, over the years. Of course, we also have स्नैक्स रखना भूल गया यार, दूसरे स्ट्रीम के में रख लूंगा. चलो कोई नहीं भाई. एक सेकंड, 40 लाइक भी नहीं है. मैं तब से बोल रहा हूँ भाई, 50 लाइक कर देते. स्क्रीन पर हम दिखा रहे 100 लाइक्स. भाई कम ऑन. प्रीटी श्योर यहाँ पर 50 लोग ने तो दिखाई है, उसे डबल देखा यार. आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट. YouTube gives me the stats. So guys, whoever is not liking, who is not liking the like button ना, who is not pressing the like button, please feel free to give feedback bro. Again, आप जितना like button दबाएंगे every stream में, for any streamer that you generally like, that's when you will get notifications, man. That helps the algorithm. बाकी अपने जो 3,700 लोग हैं जो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ गायब हो गए after last year, bro, even they will come. Again, let's be honest, if I had got a celebrity guest here, at least 2,000 people would have seen, right? हम सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम घंटा भी नहीं जानते ब्रो, वो भी है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सपोर्टिंग, मच लव. एनीवे, संजीव बोल रहे बॉस, ये क्या हुआ यार, बारसा हार रही इसलिए क्या? विमेंस सेरिया एंड ला लीगा अभी तक खत्म नहीं हुआ. हाँ, इट्स लास्ट वीकेंड ब्रो. इनफैक्ट इवन मेसी का लास्ट गेम है टुनाइट 12:30 AM, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PSG के लिए. दैट्स आल्सो देयर. तो यू हैव लीगा, ला लीगा एंड सेरिया खत्म नहीं हुआ. यस, ला लीगा कल है मैचेस, सेरिया आज और कल दोनों है इनफैक्ट. ओके ओके. कोई नहीं, टेक केयर ब्रो. सैंचो घंटा कर रहा है यार, टॉक अबाउट घंटा.
भाई I really feel कि यार Man City in the second half will be next level, bro. As much as हम चाहेंगे as a neutral to have a good, you know, second half as well. Why can it go to extra time? Am I ready for it? I probably am not. I might have to move my stream, the other stream, यार, to 10:45 then. Let's see. Anyway, मैं स्टॉपेज टाइम 4 मिनट है. यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ भाई. गोल ऑलमोस्ट आ गया लेकिन सिटी क्लियरिंग इट टू फॉर अ थ्रो इन. एग्जैक्टली exactly. मैं 10:30 बजे सोच कर किया था कि यार एक्स्ट्रा टाइम होगा लेकिन अगर पेनल्टीज हो जाए तब तो मुझे मूव करना पड़ेगा. मे बी विल स्टार्ट अराउंड 10:45 ब्रो. रंजय नो प्रॉब्लम. आई थिंक होपफुली यू गाइस विल जॉइन. अगेन रिमेंबर दैट्स अ वेरी वेरी स्पेशल स्ट्रीम. वी गोट टू बी डिस्कसिंग. मैं काफी स्टडी किया भाई पोचेटिनो को एंड जस्ट ईपीएल ट्रांसफर्स भी काफी कवर कर रहे हैं अपने को. इसको कॉपीराइट क्या बोलते हैं? वी शुड मेक इट राइट. ट्रेडर गेमिंग. हमको घंटा नहीं पता ब्रो. अंकित भाई 2009 की याद आ गई. इफ यू नो यू नो. भाई बाय द वे टॉकिंग अबाउट 2009 एंड लेजेंडरी मैचेस ना. मैंने खुद का वीडियो देख रहा था भाई 1 साल पहले का. मैंने शायद शेयर भी किया आज कम्युनिटी में. चेक इट आउट पीपल. तो बेस्ट एफए कप कमबैक्स एंड इन 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 विद इन अ गेम. तो वो आप चेकआउट करना मे बी हाफ टाइम में या लेटर ऑन. कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी फॉर यू ऑल. हाँ, the way that I've recorded that etc you can clearly see the improvement in me hopefully, but I think worth a watch 100%. टाइम स्टैम्प से. अरे गंदा टैकल by Van Bissaka on Grealish. Looks like it. Will he get a card? Yes, he gets a card. Van Bissaka, the guy who won a penalty for Manchester United. कहीं ना कहीं दिस वाज कमिंग यार. ग्रिलिश और वैन बिसाका के बीच में चल रहा है. हाँ, दैट वाज लेट. दैट वाज लेक. द ट्रेलिंग लेग से भाई धीरे से कोपचे में निकाल लिया सोचा लेकिन नहीं. आई थिंक एरन वैन बिसाका डिजर्व द येलो कार्ड. अरे डरे नहीं यार. नो प्रॉब्लम मैन. भाई देखिए यार जो दिखता है वो बिकता है. दैट्स लाइफ ब्रो. दैट्स लाइफ. अपने अपना देश फॉर सम रीजंस. आई लव माय कंट्री. आई विल लव माय कंट्री. बट देयर आर सम रीजंस यू नो फॉलो द क्राउड. भेड़ चाल जो होती है ना यहाँ पर. सच में बोलूँ ना लोगों को खराब लगेगा. आई नो कुछ लोगों को पसंद है कुछ कंटेंट बिकॉज वी काइंड ऑफ हैव मोर फन. बट पीपल यू नो स्टीरियोटाइप सर्टेन सेक्शन मैन. वो होता है. कोई नहीं. थोड़ा बोरिंग हो गया मैच गौरव. हाफ टाइम है ना तो अभी दोनों टीम नहीं चाह रही गौरव फॉर देम टू गिव अवे दैट लीड. लेकिन केविन डे ब्रुयने हैविंग अ फ्री किक आफ्टर ग्रिलिश विनिंग अ फ्री किक यहाँ पर एंड वैन बिसाका गेटिंग येलो कार्ड. बाय कैन ही डू दैट फ्रॉम द अदर साइड जो किया था इन द बिगिनिंग फ्यू मिनट्स जहां पर रॉड्री को मिला था फ्री हेडर. आई थिंक लेफ्ट फुटर रहेगा. नहीं यार बर्नार्डो सिल्वा नहीं केविन डे ब्रुयने ले रहा है. इंटरेस्टिंग. आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा शुड टेक दिस. आई एम सरप्राइज्ड. वेरी सरप्राइज्ड. एनीवे केविन डे ब्रुयने टेकिंग इट. कैचिंग प्रैक्टिस जो डाविड दिया हक दिया है उसने. I think it will be half time. Yes, and that was not good, Sapadas. As much as what was also not good is what Mourinho said, but blaming Mourinho all the while is also not right, in my opinion. Arey, wow. Awesome stuff, bro. Yes, by the way, for people who know it, we have a Who Am I? One of the goated quiz, I would say, upfront. You cannot find such quizzes on internet, bro. जो हमने किया था, and not just recent seasons, but even the first couple of seasons. वो और भी interesting था, in my personal opinion. I can buy definitely. I agree. ये वाला handball नहीं था आज तो भाई anyway elbow था जो किया है. Tomorrow I have an early morning train, so I will watch on the ride. Okay, no problem. Ranjay, big up to you. I bet City fans think that is a valid yellow. आई थिंक आई एम नॉट अ सिटी फैन. सागर अगेन भाई सागर मतलब आज दोनों ही में मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ. अगेन इट्स ऑल अबाउट ओपिनियंस बाय ब्रो. यू नो इट. मुझे लगता है वैन बिसाका का येलो कार्ड 100% था. आई थिंक इट वाज अ ट्रेलिंग लाइक ही एग्जैक्टली न्यू व्हाट इज डूइंग और ग्रिलिश ओवरएक्ट किया. नो टू वेज अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम येलो कार्ड था. अगेन आप बोल रहे हो यार मैं आप बोल रहा हूँ ग्रिलिश का एल्बो के लिए पेनल्टी नहीं बोल रहा हूँ. बट आई थिंक पेनल्टी आई थिंक द बिट टू स्ट्रॉन्ग. मतलब मैं ओल्ड स्कूल हूँ यार थोड़ा सा. वह हूँ. Not old, but old school. There's a difference. But anyway, coming to it, by who is the man of the match in the game? Again, Kevin De Bruyne. What a brilliant start for Gundogan. What 13 seconds goal. Sensational stuff from Man City to begin with. But at the end of the day, by Kevin De Bruyne को दूंगा मैं. Brilliant. The way that he won that ball. उसके few minutes बाद में वापस रॉड्री had a free header. Arguably one of the better free kicks जो केविन डे ब्रुयने का देखा है हमने इस सीजन में. That's how good he was.
He was awesome in my opinion, and I think Kevin De Bruyne has been standing out in this match as much as Gundogan or Rodri or Fernandes को दे रहे हैं football.com. आप लोग बोलिए who has stood out? Rashford not really in the game if I'm being very honest. Haaland almost the same. Haaland को एक chance था by the way, almost in if I'm not remember right, Gundogan ने उसको play in किया था through ball and Haaland almost died and got it. But again Silva और Shaw का अच्छा बैटल देखने को मिला है. Midfield battle between Rodri, Gundogan, De Bruyne, Stones versus Casemiro, Varane, Lindelof and Fred अच्छा है. Casemiro को अच्छा पॉइंट दूंगा मैं क्योंकि Casemiro has won a brilliant couple of headers सेट पीसेस पर और वहां पर ग्लांसिंग हेडर कर सकते थे रैशफोर्ड बट डिड नॉट टेक इट वेल. वैन बिसाका's moment, of course Grealish moment, in my personal opinion it was not a penalty, very soft, especially जब आप वीआर जा रहे हो और वीआर चेंज करी डिसीजन, इट वाज नॉट क्लियर एंड ऑब्वियस. यस ब्लेटेंट हैंडबॉल वो क्लियर एंड ऑब्वियस था, बट डिड ही टेक इट a proper chunk of Van Bissaka? No. और मैं old school हूँ भाई, it is a contact sport. as much as वो जानबूझ के किया भाई, don't tell me defenders जानबूझ के नहीं करते contact a lot of times. So in my opinion just because basically Van Bissaka was airborne और वो एक slow motion में गिर रहा था, it seems like Grealish ने clear कोनी से मारा है, but नहीं. I don't think it took much of him. That's just my opinion. I might disagree with you. You might disagree with me, which is totally fine. But do you think it's working? Especially Sancho is not working, in my personal opinion. They need to do something of that. Will you think they'll make it even more narrow and get their fullbacks to bomb on? That might be one of the things जो करे. यहाँ पर अंकित भाई ये क्या है? Darren, big up यार. I don't know about that. Let's see. But yeah, if it goes penalties, the nerves will be high. अगेन मतलब इट कुड गो देयर. मैं चाहता नहीं हूँ पेनल्टी जाए, मचा मैं चाहता हूँ कि यार एक्स्ट्रा टाइम में मैक्सिमम हो जाए और क्लोज रहे मैच, बट आई डोंट थिंक पेनल्टीज इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी यार, टू बी ऑनेस्ट. केडी पे बैंगर तो आज डिजर्व करते हैं हम न्यूट्रल फैंस. टिम्बर हैज सम सेंस. एक सेकंड भाई, मैं आई जस्ट गेट सम स्नैक पीपल यहाँ पर. अगेन डू लेट मी नो आप लोग. आई एम जस्ट फीलिंग हंग्री ब्रो. भाई हंग्री क्या क्या हो जाए सब लोग. मैं यहाँ पर एक सेकंड अपना कैमरा बंद करूंगा, बट आई बी बैक. डू नॉट गो अवे यार, पकड़ के रखे. बट आई बी हियर. ऑलमाइटी ब्लूज का डाला है क्या मैंने? एक सेकंड मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ. आई बी बैक एंड यस लेट मी नो हु इज योर बेस्ट प्लेयर टिल नाउ एंड आई एम कमिंग इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स. काउंट टिल 10. जस्ट कमिंग. चलो आ गया. गेटिंग सम क्रैक जैक. अरे मुझे नाम नहीं लेना था, बट कोई नहीं. भाई हैज द रेफरी गॉन क्रैक दो? मतलब दैट पेनल्टी अगेन क्या बोल रहे हो? क्रिटिसाइजिंग रेफरी इज गुड बट हरासिंग हिम यार, आई डेफिनेटली अग्री. मतलब मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा दैट हरासिंग एंथनी टेलर वाज राइट. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. द गाय शुड बी बैंड फॉर लाइफ टू गो टू अ स्टेडियम एंड एनीवेयर क्लोज टू अ स्टेडियम. मैं तो बोलता हूँ यू नो रेडियस, वो भी बोलता हूँ सम प्रॉपर होना चाहिए. अब प्रॉपर केस वहां पर बनना चाहिए और एंथनी टेलर डज नॉट डिजर्व दैट. नो रेफरी डिजर्व्स दैट. नो ऑफिशियल डिजर्व्स दैट. बट साथ साथ में आई एम आल्सो सेइंग डायरेक्टली एंथनी टेलर इज अ फ्रॉड. लेट्स बी रियल. एज मच एज आज तो भाई टेलर नहीं है फिर भी हो गया, बट एट द सेम टाइम Mourinho should have controlled his lips. Absolutely. It's so viral knowing that Mourinho एकदम one of the goated managers है. But can we blame him only? नहीं यार, it's not the case. Telling that the guy got instigated or जो guys जो hate दिए because of Mourinho, I don't think so. As much as Mourinho did overreact, but not totally as well. Eriksen is looking lost. Eriksen, yes, that's a good point. Ranojoy saying, मतलब हमने बोला ही था. Will they basically go with a Wout Weghorst in the second half? आप बोलिए. Manchester United fans in the house, everyone. Will a Wout Weghorst come? Because remember, it's 1-1. I don't think there's a need to get a striker, but Wout Weghorst brings you some physicality, or he can play in that number 10 role भी. So with Bruno Fernandes playing right hand side में, that is one possibility. On the other hand, मैं दिखा देता हूँ आपको बेंच दिखा देता हूँ क्या है. एक सेकंड. बेंच में यहाँ पर यू हैव ऑफ कोर्स सिटी का तो बहुत तगड़ा बेंच है भाई. आपके पास अगर आपको चाहिए और वर्क रेट मे बी स्कॉट मैकटोमिने एक्सेट्रा, लेकिन अगेन अगर लीड कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड मेक्स मोर सेंस टू गेट हिम ऑन. अदरवाइज मैं आई थिंक आई माइट कंसीडर गेटिंग इन Garnacho in the second half, not too early but late on, और Wout Weghorst actually seems a viable option मेरे लिए. as much as मैं आप बोलोगे डच फैन हूं and all that, I still see that. Okay, if you are talking about the penalty that was given, it was due to the handball, not the elbow. Okay, तो I got it wrong is what I believe. सागर अगेन मैं ऑडियो समय से सुना नहीं था द मोमेंट इट हैपेंड. लेटर ऑन जो मैं सुना था, आई थॉट
हैंडबॉल दिया तो भाई आई वुड से इवन मोर रॉबरी. सिंपल. मतलब टू टेल दैट he kind of changed the direction of the ball और वैन बिसाका ले जाता. मतलब was he through on goal? Probably not. I don't think so, bro. मतलब it's very harsh. It's very harsh. I don't think it's a penalty. Again, I would stick to that. मैं चेंज नहीं कर रहा भाई. मेरा ओपिनियन है सागर. Again, लेकिन आपने अगर बोला है हैंडबॉल, आप सुने कमेंट्री को, तो मे बी आई एम गेसिंग दैट्स करेक्ट because I put on the commentary later on the volume, but कोई नहीं. The three-man defense is not looking that good for City. Akanji is not able to contain AWB, and in my opinion, Stones has to come into the defense to give more cover to Diaz. नहीं, that's a good take. लेकिन I think that has worked for them यार. I don't think वो change करने की जरूरत है उनको. सिटी चेंज करना मुझे नहीं लगता होने वाला है. एज मच एज एक गोल आया, लेट्स बी रियल, वो एक पेनल्टी थी. हाँ, कैसेमिरो गॉट इन अ फ्यू हेडर्स, ही वन अ फ्यू बॉल्स, लेकिन ऐसा नहीं कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेट किया. ऑब्वियसली सिटी हैज डोमिनेटेड द गेम मोर, राइट. भाई मैं तो बिस्किट ही खा रहा हूँ यार देरेन. मैगी यहाँ साथ साथ में नहीं कर सकता ना संजीव. कोई वी हैव टू स्टॉप सिटी टू विन द ट्रेबल बोल रहे हैं. मार्को रॉयस इंटर विनिंग चैंपियंस लीग हसी बोल रहे हैं. David Dea has been liability. देखिए यार, मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ हाफ टाइम पे, सागर एंड एवरीवन हु डिसएग्रीज, व्हिच इज रिस्पेक्ट टू यू यार. आपका ओपिनियन इज योर ओपिनियन. नॉट ट्राइंग टू क्लेम कि ओनली आई नो फुटबॉल, ब्रो. डेफिनेटली नॉट. एज मच एज मैं तो घंटा जानता हूँ, लेकिन and they agree. And one man who was actually I was lucky enough to meet on Sony TV is actually saying the same, and I respect him, guy. He's an ex Man City player, of course. वो थोड़ा सा Man City bias होगा, लेकिन he's ex Chelsea player as well. तो I don't think it's a penalty, bro. I again repeat it, it's not a penalty. Again, एक और moment था, remember, जो Kevin De Bruyne was brought down by Fred. Man City fans were appealing, Man City players were appealing. Again, I thought उसमें I agree with the referee. वहां पर Fred was blocking the ball, so I don't think it's anywhere close to penalty. That one, I agree, it wasn't a penalty. The guy had no clue यार where the ball is going. कहीं ना कहीं elbow was unnecessary though. ये जरूर से बोलूंगा. Interesting. मार्को रॉयस को शाउट आउट क्यों दे रहा हूं? नॉट बिकॉज इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, नॉट जस्ट. मार्को रॉयस ने बोला था जब हम यूरोपा लीग किए थे ना फाइनल 2 दिन पहले, ही प्रेडिक्टेड राइटली एंड लुक्स लाइक आज भी होगा. लेट्स सी. आई स्टिल फील गोल्स आ रहे इस गेम में. आई डोंट सी द सेकंड हाफ गोइंग गोललेस. व्हाट डू यू ऑल थिंक? लेट मी नो. और चेंजेस क्या होंगे? लेट मी नो दैट एज वेल. मैं राइट अवे तो चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा क्योंकि 1-1 है. गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉट टू बैड फॉर मैन सिटी, बट एट द आर मार्क मैं देख रहा हूँ चेंजेस आएंगे. एंड अगेन आई फील दैट वाउट वेगोस्ट हैज समथिंग ड्यू. आई जस्ट फील दैट. पता नहीं, गट फील आ रही है. These cases have been given handball every time, even against us. Luke Shaw, same position, was given penalty versus Brighton. Neeraj again. मैं नाखुश नहीं हूँ. Don't get me wrong. And yes, I'm not against Man City as well. मैं एक्चुअली, लेकिन सच बोलूं तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं आज, as much as I'm not a Manchester United fan, मैं चाहता हूँ Manchester United beat करे, because I don't want the English game to turn into a farmers league. Yeah, that's the only reason. लेकिन सच्चाई ये है कि इट वाज नॉट अ पेनल्टी, ब्रो. एंड एज मच एज पहले दिया गया जस्ट बिकॉज दो बार चीजें गलत हुई है, तीसरी बार गलत हो तो करेक्ट हो, इज नॉट द राइट थिंग. मेरा ये ओपिनियन है. मस्ट लव. Agreed. FA Cup Final, it will be one of the most watched games in the world. FA Cup Final, as much as अपने देश में भाई इतना फेमस नहीं है for whatever reasons, because भाई with all due respect all the Real Madrid Barca fans, कुछ लोग सोचते हैं भाई that is football and that is end to it. And I know a lot of Manchester United fans and Liverpool fans are also there along with Arsenal fans अपने देश में. लेकिन कहीं ना कहीं FA Cup का history, people don't really realize how big it is. There used to be times even in India in the late 90s, मुझे याद है, when an FA Cup final was the only thing shown on TV. So that is something that people should realize how big and old it is. यार एक गुरूर होता है यार FA Cup final जीतना in front of basically the new Wembley. What's a bigger crime, 2009 Chelsea Barca और मैगी में फैंटा? भैया हम तो घंटा नहीं पता. बिल्कुल बिल्कुल. पीपल आर सेइंग इट्स नॉट पेनल्टी. अभी अदर वे अराउंड होता तो कुछ नहीं बोलते. पता नहीं देवेश बिग अप यार क्या हाल है, लेकिन आई जेन्युइनली फील दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट लकी देयर. आई जेन्युइनली फील
मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूंगा. इट इज हाउ आई सी द गेम ब्रो. मुझे लगता है हैविंग प्लेड अ लॉट ऑफ द गेम एट सम लेवल, मुझे लगता है दैट आई वुड हैव बीन डिसहार्टेंड बिग टाइम अगर हम सिटी मैं सिटी प्लेयर होता, ग्रिलिश होता उस सेकंड में. बट अगेन रूल्स आर व्हाट इट इज. अब गोइंग बाय द रूल्स इन स्लो मोशन, आई डोंट एग्री विद दैट. अरे बिल्कुल बिल्कुल सागर. रेस्पेक्ट ब्रो, मटाटा यूनाइटेड. ओके, मे बी. लेकिन फॉर द रेफरी टू चेंज दैट, ही हैज अ चॉइस राइट. जनरली जब रेफरी वीआर बोलता है कि देख ले भाई टीवी, ठीक है, गड़बड़ नहीं हो जाए, तो रेफरी still has a decision to make, right? Why is he always going with the TV referee? I don't know. We didn't get exactly. हम तो भाई, हमें तो भाई घंटा पता है भाई गौरव, चेल्सी फैंस को तो. बट कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ. द फैक्ट इज, देखिए, वी आर ऑयल मनी. That's how it is. You know the hate that we get. If Pep and City players won there, okay, but somehow I feel they aren't giving 100% for some reason. नहीं, I don't think so यार. Matar United, City have been clearly the better team यार. It's just that Manchester United के blocks have been good. I know XG Manchester United का ज़्यादा है compared to City. That's because of Casemiro getting a brilliant couple of headers. Varane almost scored by the way, a far post में of a corner. लेकिन दोनों के big chances एक ही हुए हैं. But I would still say that City are controlling the game. कहीं ना कहीं they will turn it on. उनका है bench काफी strong है versus United अगर जाता है extra time में. So I'm still seeing City are favorites on paper, but वही I'm a romantic, so I can see a surprise coming. Let's see. If Pep and City players won, ये तो ले लिया था. I think City will be more fluid in second half. I'm seeing Mahrez and Alvarez incoming today. Mahrez has to come यार तनुज. It's unfair that वो FA Cup final शुरू नहीं कर रहा. सच में बोल रहा हूँ तो. I think Mahrez has been sensational in the FA Cup this season. शुरू नहीं हुआ ना. बट एग्जैक्टली स्पोर्ट्स जीनियस, सी स्पोर्ट्स जीनियस जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर, कमेंट देखे सब लोग ऑन स्क्रीन. द फैक्ट इट वाज 50-50 इज क्वेश्चनेबल कि रेफरी वीआर वाज आस्क्ड, has asked the referee to see the decision and change it. That is the point. It is not 100% clear. I think City were unlucky. Again, मैं यहाँ चेंज नहीं करूंगा अपना ओपिनियन. बाय द लेटर ऑफ लॉ हो सकता है, बट यार हम तो घंटा जानते हैं. मतलब I think more than Grealish, Messi is good. मैं बोलूंगा while that battle is also good, Silva versus Shaw has been an underrated battle इस game में. And I agree with you. Bernardo Silva जो usually करते हैं has not been himself. That part I agree. But does that mean that they need extra players on the wing? They may go to 4 at the back. I don't think so. City change करने की जरूरत नहीं है, my opinion. गुंडोगन अगेन भाई 13 सेकंड में गोल किया था बंदा. वाओ. 22 टाइम तो नहीं है भाई. यूनाइटेड आर सेकंड आई नो, बट नॉट 22. I don't know which challenge you're talking about, but I didn't notice anything like that. I think I don't know which player you're talking against, but एक और टॉकिंग पॉइंट था. याद रखिए यहाँ पर एक येलो कार्ड मिला था लेट टू एरन वैन बिसाका फॉर अ चैलेंज ऑन ग्रिलिश. आई थिंक इट वाज अ येलो कार्ड. He exactly knew what he's doing. Like Grealish exactly knew what he's doing to Aaron Van Bissaka in the box, but he was kind of lucky that इतना ज्यादा नहीं लिया बॉल को. But people are saying handball है, पता नहीं. Predictions guys, predictions. Sorry मैं साथ साथ में खा रहा हूँ. Second half predictions
46:59 में हमने वापस रिस्टार्ट करना है क्लॉक को. Yeah, the mentality of Manchester United, I have to give them thumbs up here. The fact is, 13 seconds में you have conceded. They have come back well, but again, arguably, Rodri should have scored. And Varane as well, to be honest. Yeah, I get you. Goal आने वाला है क्या? अरे भाई, Jadon Sancho doing his thing, bro. Wow, almost got through. Awesome stuff, यार. Boy, Jadon Sancho almost. भाई सब लोग predictions in the comments, यार, everyone. Second half predictions. अभी भी मैं बोलता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड बीइंग अ रोमांटिक बाई विल गो इन विन इट, एज मच एज मैं तो न्यूट्रल हूँ. They needed some luck in this game and they've got some luck in this game and that will be the difference maker. लेकिन it might be at least a couple of goals. मुझे अभी भी लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम जाएगा. एक्स्ट्रा टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड will get that goal. It'll be a 3-2 Manchester United victory in extra time. Remember, Akanji is not naturally left-footed, so he gave the ball away now. It's a clear indication that उस स्विंग में, as Messi is good ने बोला था, there is a pressure been created. चलो भाई, यहाँ पर हम वापस से क्लॉक शुरू कर दिए और ये हमारा क्लॉक आपको दिख ही रहा होगा. ठीक है, मैच कर दीजिए सब लोग. सेकेंड हाफ का क्लॉक के लिए वेट कर रहा था मैं. मैन सिटी 3 यूनाइटेड 1. तो मटाटे यूनाइटेड स्टिकिंग ऑन टू हिज initial predictions, and yes, let's get to 60 likes. Actually, let's get closer to 100 likes quickly, guys. Come on. मुझे तो बोल रहे हैं सेकंड हाफ में गोल नहीं आएगी. मुझे लगता है बैटल तो रहेगा. अगेन, विल आई बी सरप्राइज बाय रेड कार्ड? नो. मुझे लगता है रेड कार्ड भी आ रहा है, लेकिन नॉट इन नॉर्मल टाइम, इन एक्स्ट्रा टाइम. In between the lines, pass by Stones. Silva, bad pass back to City. Akanji. Kesha Borre, late header. Casemiro has been good. I liked Casemiro's involvement in the game अभी तक. ओहो, क्या प्रेस किया भाई यूनाइटेड ने, लेकिन स्टोन्स, व्हाट अ टर्न ब्रो. डेरियन बोलते बोले 2-1 सिटी. काइल वॉकर ऑन द रन. भैया, फ्रेड का वो पुश फाउल कॉल करना चाहिए था या नहीं भैया? नहीं, टू केविन डे ब्रुयने ना. नहीं, इट वाजंट अ पुश. ही वाज प्रोटेक्टिंग द बॉल. Matata United bro. I love your comment friends at times. डेरियन क्या बोल रहे हो? डेरियन इज जवाब. केडीबी क्रॉस, गोल आने वाला है. ओ माय गॉड, नो वन इन द बॉक्स. हालैंड के पीछे गया बॉल. केडीबी क्रॉस. अग्रीड. अगेन भाई, स्पोर्ट जीनियस का भी चैनल है शायद, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. पीपल विल चेक हिम आउट एज वेल. Bernardo Silva is kind of dropping back ज़्यादा. I think he needs to get involved. I think I agree there. किएजा तो है ना यूवेंटस में. Not sure what the context, bro. He'll be there itself. Challenge on De Bruyne. अनूप, मैं आपके कमेंट पर जवाब दिया था यार, आप पता नहीं सुने थे कि नहीं. काई हावर्ट्स का मैंने स्टार करके बाद में दिया था आपको कमेंट. फिर Fred doing Fred things. Casemiro ना, he's just on the edge संजीव. जो डिएगो कोस्टा रहता था भाई, संजीव पता है
चेल्सी के लिए Diego Costa has never got a red card on the field. Casemiro is almost that, just on the edge. चलो भाई. अरे यार, what rubbish! Gundogan with a double. No way Man City let him go, and what pathetic defending by Manchester United again. Big up yaar, big up the Man City players bro to come back. Corner tha, direct corner. It was from the training ground. कहां थी मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस? ऐसा भी नहीं था कि बढ़िया वॉली था लाइक द फर्स्ट गोल बाय रिजवान. बिग अप यार रिजवान. वन रिक्वेस्ट ब्रो, प्लीज डू नॉट पुट द स्पॉइलर ब्रो, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो 5 सेकंड पीछे हो रहा था यार आप, इसलिए मैं टाइम स्टैम्प डाला मेरे भाई. आई नो थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है, कभी हो जाता है, बट बिग अप टू एवरीवन हियर, बट प्लीज नो स्पॉइलर्स ब्रो. लेकिन हाँ, यहाँ वॉली डायरेक्टली, वेयर वाज द मैनचेस्टर डिफेंस भाई? बैड बाउंस यू कैन आर्ग्यू, लेकिन कैसेमीरो, वरान और वैन बिसाका के बीच में कहीं से बॉल घुस के चली गई. वेयर वाज डेविड डिया? ब्लंडर फॉर श्योर. लुक एट पेप ग्वार्डियोला मैन. व्हाट इज दिस मैन? 2 असिस्ट और 2 गोल्स. De Bruyne 2 असिस्ट और 2 गोल्स. नो चैलेंज. टेरिबल डिफेंडिंग, मतलब नो वन वेंट फॉर अ चैलेंज ऑन द बॉल. आप अपना बेसिकली हाथ ऐसे रख लिया और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? व्हाट रबिश इज दैट? गया चांस, गया बस, खत्म. Can they come back yet again? Can they get some luck again? They have to utilize the luck that they got in the first half. And again, I repeat, मुझे लगता है that penalty was soft. I generally believe that. Evolution Gaming Lux, congratulations, bro. Gundogan. Bhai, how can you let go Gundogan, man? Why is age such a bad thing, bro? 32, yes. You cannot sell him later on. लेकिन ऐसे भी free में जा रहे हैं ना. Why sell Gundogan? I don't understand at all. If I was City, I would have made sure 2 और साल रहे. Van Bissaka challenged by Akanji or Manchester United fans in the stadium appealing a penalty nowhere close. Exactly. Yes. Matata United, great point. Great point. क्योंकि हाफ टाइम में आई एम प्रीटी श्योर बातें हुई होगी. प्रेसिंग बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा हो रहा अब. नो प्रॉब्लम ब्रो, बट यार फ्यूचर के लिए प्लीज रिजवान, मस्ट लव यार. गेम ऑन तो ऑलरेडी था, अब तो भाई गेम खत्म होने वाला है. मुझे लग रहा है. यस यू कैन आर्ग्यू, लेकिन फर्स्ट गोल देखो, आई कैन स्टिल गेट इट. 13 seconds. I know you have to be up for the FA Cup final, but it was a crazy volley, bro. लेकिन Ortega, man, brilliant distribution for the first goal. मैं बोलता हूँ, as much as De Bruyne, yeah, he won the ball, and where वहां पर Lindelof should have done better. Clifford, I'm shocked, bro. Why is Kovacic going there in case Gundogan stays? नहीं होने वाला भाई. European football will easily get a team, even 32. Varane and Lindelof here at fault. The sports genius, Manchester United fans in the house, would you be saying that Lindelof for the first goal, Varane for the second goal? Fair to say? Fred, bhai, he'll get a yellow card very soon. एक और foul. अरे wow. Not a yellow card this time. लेकिन 3-4 बार गिराया भाई फ्रेड ने. 3 बार तो I remember for sure. Darren, if you know, you know.
Chelsea fans will know this comment. Generally, English Cup finals, how it has been recently, as much as we were the team who always used to win English Cup finals more. Even back in the 90s, yes, 97, 98, 2000. Acha, the fact is, Champions League hai next week, so they might go a little bit more defensive than usual. City, I don't know. Kevin De Bruyne a free kick, Haaland winning the ball in the box but losing it in the end. Given away by United again. Cross आया है for nothing. It's a corner. Two different players, Matar United. How can we compare? Rashford is more like a left forward. I don't see him as a centre forward. Haaland is a proper centre forward, bro. Tell me, give me a different question. Mario Goat says birthday, but anyway, happy birthday to Rizwan in advance. He's a German fan, right? Rizwan. So obviously Mario Goat won them the World Cup na, in terms of the final goal. Again, not achieved enough for me, but भाई दे रहे हम कल रात TFHD पर थे टॉक फुटबॉल HD बिग अप टू जी भाई यार मैं उस्मान बस जी भाई डिस्कसिंग ब्रो if you remember towards the end if you people watch that stream भाई City fans are giving us a lot of hate bro although हम तो न्यूट्रल से I don't know why इतने सारे City fans आ गए यार and that's good for City man कहीं ना कहीं they're building the fan base every fan base at some point build a global fan base every big club probably this is their time लेकिन हाँ अगेंस्ट रियल मैड्रिड हमें याद है यार सेकंड लेग में क्या एटमॉस्फेयर था एट द एतिहाद भाई एक सेकंड काउंटर आ सकता है सिटी का सिटी आर प्लेइंग काउंटर सरप्राइजिंगली नहीं आई डू नो तो तपा दास आई डू नो हाँ कपल पर्सनली जानता हूँ लेकिन वेरी वेरी लेस बट टॉक अबाउट राशफोर्ड आई थिंक दे नीड अ सेंटर फॉरवर्ड मोर लिचा जब फिट नहीं है यस यू कैन आर्ग्यू बट लिंडलॉफ जनरली इतना बुरा नहीं होता यार द काइंड ऑफ स्टार्ट ही हैड दैट्स व्हाई इज लुकिंग शेकी टुडे I think they need a replacement for Weghorst, as much as I'm a Dutch fan. Acha. Gundogan getting the ball from Grealish on left hand side. Arey yaar, Haaland was waiting in the middle. Bad cross by Gundogan from the left foot. Daylight robbery penalty थी. Daylight robbery ये होगी. But कहीं ना कहीं बारसा they're not giving away. But Messi is good मेरे भाई. ये जो कल मैं डिस्कस किया था अपने स्ट्रीम में आई थिंक जी भाई के साथ ही किया था दैट परसों जो कैंसलो वाला एपिसोड हुआ था ना इज एक्चुअली ट्रू ब्रो हमने बोला था कि मे बी दैट्स पेपर टॉक ऐसे ही लेकिन जावी एक्चुअली वाजंट हैप्पी विद मैन सिटी द फैक्ट इज कैंसेलो को अलाउ नहीं किए थे टू बार्सिलोना इन जनवरी इट वाज कंफर्म्ड यस्टरडे बाय अ रिलायबल सोर्स एज वेल मेसी इज गुड तो वहां पर विल दैट अफेक्ट गुंडोगन्स ट्रांसफर मैं तो अभी भी बोलता हूँ व्हाई इज सिटी लेटिंग गो गुंडोगन ऑफ आई डोंट नो मतलब कहीं ना कहीं दे रिस्पेक्ट अ प्लेयर हु इज गिवन देम सो मच फेयर इनफ बट ऐसा नहीं है भाई ही इज बीन देयर फॉर लाइक 10 इयर्स मैन और 32 है बट गुंडोगन अगेन मैं कुछ प्लेयर्स बोलता हूँ ना जॉर्जिनो है गुंडोगन है दे नेवर डिपेंड ऑन द पेस एनीवेज तो उनका करियर लेट जा सकता है दे कैन प्ले टिल लेट इन माय पर्सनल ओपिनियन और एंड्रे पिर्लो वेस्ट हैम अरे भैया अभी जितने यंग बच्चे फुटबॉल देखना स्टार्ट किए हैं दे मोस्टली सपोर्टिंग मैन सिटी बिकॉज दे आर विनिंग एवरीवेयर ओके एंड गुड फुटबॉल भी खेलते हैं दे आर गेटिंग लॉट ऑफ सुपरस्टार साइनिंग्स पेप ग्वार्डियोला फैक्टर
Haaland factor, of course, Kevin De Bruyne. I can understand. But मेरा है पर्सनल यार, I personally like possession football, but I like जो possession football जो हम बात करने वाले हैं आज रात को 10:30 बजे on Almighty Blues FC. संजीव मिस मत करिएगा. Tactical stream और you will be surprised certain things which I tell tonight. We have a guest and special guest for that for sure. लेकिन studied a lot, bro, about Pochettino and generally watched a lot of stuff. So we'll be discussing a lot of things. Hopefully हम pictorially समझा भी पाए आप लोगों को. लेकिन apart from that transfer news तो है ही खैर बात करनी काफी IPL की. Was Mourinho throwing away the silver medal a correct gesture? No. सुताबादास देखिए, Mourinho wasn't, एक सेकंड गोल आने वाला है केविन डी ब्रुयने का, भाई बचा दिया डाविडिया ने. His trademark foot clearance. Kevin De Bruyne was clear. Should he have got a better shot? Probably yes. Cross है वापस से फार पोस्ट में, केविन डे ब्रुयने वापस से आ रहे हैं यहाँ पर, but I think it's offside ग्रिलिश का. ग्रिलिश is not happy. भाई जोसे मोरिन्यो का एक, it's not about him disrespecting Europa League. Don't get it wrong. भाई haters, lot of them are saying it. और बहाना चाहिए यार मोरिन्यो के अगेंस्ट जाना, कहीं ना कहीं वो इनवाइट भी करता है समटाइम्स, ये भी मैं अग्री करता हूँ. लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है. मोरिन्यो हैज ऑलवेज सेड इट, आई प्ले टू विन अ फाइनल, सिंपल. और वो डिसरेस्पेक्ट नॉट फॉर द कंपटीशन है. भाई गर्नाचो कमिंग इन, जैसे हमने एंटिसिपेट किया था, गर्नाचो विल कम ऑन, बट आई थिंक इज कम अ लिटिल बिट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. व्हाई? बिकॉज़ दे आर ट्रेलिंग. एरिक्सन गोइंग ऑफ, एरिक्सन डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम. तो भाई एरिक्सन गोइंग ऑफ मींस ब्रूनो फर्नांडिस अब सेंट्रल हो जाएंगे, सैंचो विल बी गोइंग राइट विंग, गर्नाचो विल बी प्लेइंग लेफ्ट विंग. मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, कम बैक टू द कमेंट तुताबादास एंड अदर्स एज वेल. भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, जो भी लोग नहीं दबाए अभी तक लाइक बटन. तो एरिक्सन गोइंग ऑफ फ्रॉम द नंबर 10 स्पॉट, और वहां पर ब्रूनो फर्नांडिस आ सकते हैं राइट विंग. अब जाएंगे सैंचो, लेफ्ट विंग आ गए गर्नाचो, द यंगस्टर who knows how to make it big as well in my opinion. But coming to this, every final Mourinho has done that, and he didn't throw away like in anger or something. He actually particularly asked, and people don't see that thing. आप पूरा वीडियो देखो यार, पूरा एक 10 seconds का रील मत देखो, पूरा वीडियो देखो. लाइव देखे थे हम, we were there, right? The guy actually asked a kid in the crowd, do you want it? Because Mourinho himself did not want it, and there's nothing wrong. Many players मैं जानता हूँ do not like to keep the silver medal. They just don't. Especially European final, Mourinho के लिए historical था ये वाला. तो with that kid will gesture it यार, तो he will gesture it more than Mourinho. So Mourinho is respecting that fact, और उसको throw किया to give it to the kid, not in anger. Barca fans are so lucky to have Gundo and Messi incoming in a single window. I don't think, मतलब again maybe I'm wrong, लेकिन I'll be really surprised if दोनों आए. And financially it's possible therein. Again, I'm telling the age factor. Barca का जो mentality रहा है in the recent years, I'll be surprised with that. लेकिन considering the financials, maybe हो भी सकता है. अगर मेसी के लिए अप्रूवल मिल रहा है, जो it seems मिल रहा है, जो हम कवर ही किए थे 2 दिन पहले, I think they might want to invest a little bit in Zubimendi as well. Just saying. Mentality, bro. Mentality. One is start of the season से they changed their way approach फुटबॉल का भी. स्टार्ट ऑफ सीजन उन्हीं खेल रहे थे 3-2-4-1. तो फुटबॉलिंग टैक्टिक्स चेंज हुई है, उनका कोर बहुत स्ट्रांग हुआ है, कंसिस्टेंटली उन्होंने रखा है टीम्स को पेप गार्डियोला ने. दैट इज देयर. प्लस द मोर यू विन, मोर कॉन्फिडेंस यू गेट. सेकेंडली, मेंटालिटी इज की, बिकॉज फॉर मी दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच इज मिसिंग इन द सिटी साइड अ कपल ऑफ इयर्स अगो. They've got to that level अभी, जो हम as a Chelsea team we had got to in mid 2000s, late 2000s rather मैं बोलूंगा. अच्छा चलो, तो नाइस यार. तो मेसी इज गुड बोल रहे, गुंडोगन इज ऑलमोस्ट डन. अगेन आई बी रियली सरप्राइज इफ सिटी लेट हिम गो यार, वेरी सरप्राइज. बट इफ फ्री ट्रांसफर, अगर दे आर ओपन टू लेट हिम गो and they are interested in Kovacic more, being a 29-year-old, I think it's a mistake, but good for Barca.
Oh, over the top ball है. Rashford almost through. Rashford has to play to the left hand side. I'll be really surprised if Wout Weghorst does not come. भाई गर्नाचो मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा. गर्नाचो स्टार्ट नहीं कर रहा बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग ना मैनचेस्टर यूनाइटेड they wanted to keep a central core. तो ब्रूनो फर्नांडिस खेल रहे थे वाइडिश बिकॉज ही समवन हु नेचुरली सेंट्रल आ जाते हैं. तो वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग 3-4-1 का जो मिडफील्ड है सिटी का बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. दे कैन बेसिकली बैटल. So they could not play with two wingers. Or they believe Sancho is the more experienced guy. He's an Englishman that helps FA Cup final. By default, he was anyway starting. I know इतना impressive नहीं है, लेकिन last दो matches में towards the end of the season he did better. तो कहीं ना कहीं वो है, simple as that. और Garnacho, remember, towards the end of the season he was just returning from injury. So तापादास बोल रहे हैं सैंचो वापस मिस करेंगे like Euros. Let's see. Again, by changes, do you think it's time to make another change? Again, Alanga can come on, Wout Weghorst can come on. I think these are the only two in terms of attack-minded players. Alanga hardly खेले, so I'll be really surprised. Weghorst definitely आएंगे, maybe in the next 5-10 minutes, in my opinion. किसके लिए आएंगे आप लोग बोलिए. On the other hand, City have not made a change. और आप देखे ही हो in Champions League knockout matches उन्होंने खेला है 90 minutes without making a change. Again, little surprise considering there's a Champions League final, but I can understand how big this is, being a double potential. मुझे लगता है सैंचो विल गो ऑफ एंड वापस से यू विल हैव फर्नांडिस प्लेइंग वाइड एंड पुटिंग इन दोस बॉल्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड वाउट वेगॉस कमिंग इन और रैशफोर्ड गोइंग वाइड एंड वाउट वेगॉस बीइंग द स्ट्राइकर. सिटी आराम से अब खेल रही है सेकंड या थर्ड गियर में. दे नॉट गोइंग इन फोर्थ गियर. एंटनी इज इंजर्ड ब्रो. इंजर्ड है वो. हमने कवर ही किया था प्रीव्यू में भाई. कल प्रीव्यू हमने किया था, क्या बात नोटिफिकेशन नहीं आई थी ऑलमाइटी ब्लूज एससी में. आई नोटिस्ड बहुत लोग नहीं आए थे भाई. ऑलमाइटी ब्लूज इज डेफिनेटली आर करता धरता भाई. सब लोग we need love on both the channels. As much as we are growing in subscriptions, the views, likes matter more to the algorithm. footmob.com bro. footmob.com मैं बहुत बार शॉर्ट आउट भी देते हैं इन लोगों को ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीम में. Van Bissaka, who's had a mixed game with a run, lekin City doing well to return it back. Casemiro, very deep. Exactly. Rashford just on the top, guys. Bruno Fernandes जो सेंट्रली ज्यादा खेल रहा है, giving a pass to Rashford. I think Ortega was beaten, but over the top. Probably body was leaning in behind, right? Imagine Messi and Gundogan together. Wow. लेकिन वही है ना, I still feel that as much as Gundogan is wow, I generally feel, and Messi is definitely Messi, bro. The age factor, मतलब दोनों मेसी और गुंडोगन साथ में खेलना इन अ स्टार्टिंग 11 might kind of not be good in terms of defensive work rate जो for example a Gavi gets you in the middle. Just saying. लेकिन हाँ, if Gundogan is agreeing to be a squad player, he's a brilliant squad player, bro. Nothing could get better. If Luton Town qualifies for UCL, no, next season I'll change my name. ठीक है. लेकिन हाँ, इमेजिन करिए बहुत उनका जो डगआउट है भाई, क्या होगा. वो भी मैं बोलता हूँ संजीव, कंसिडरिंग यू हैव लॉस्ट बुस्केट्स, you need to plan the future right now, otherwise it might become late. So you need a youngish DM, not very young, एक बंदा जो स्टार्ट भी कर सके और यंगिश भी है, ज्यादा ओल्ड नहीं है. अगेन गुंडोगन ज्यादा पेस पर रिलाई नहीं करता, बट प्लेइंग अ मेसी एंड अ गुंडोगन इन स्टार्टिंग 11, आई थिंक लिटिल बिट ऑफ अ लग्जरी इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव वर्क रेट, अगर आप ट्रांजिशन में बीट नहीं होना चाहो तो.
ये क्या है? मुझे डीएम करिए भाई, डू डीएम मी इफ यू वांट टू नो, एब्सोल्युटली वुड लव टू शेयर व्हेनेवर आई एम फ्री ब्रो। जयंत भैया प्यार, हालैंड फाइटिंग यहाँ पे भाई, वराना हालैंड का अच्छा पैटर्न देखने को मिला यार, लेकिन गुंडोगन रिलीजिंग ग्रिलिश ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ग्रिलिश क्या करेंगे? ओ क्रॉस किया, लेकिन अब हालैंड को लेगा, बचा लिया यार, नहीं गुंडोगन हैट्रिक, ऑफसाइड। ऑफसाइड भाई। हालैंड, डेविड डिया हैज ही केप्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द टाई एज मच एज डेविड डिया को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे। ग्रिलिश टू गुंडोगन टू ग्रिलिश टू हालैंड, ऑफसाइड तो डेफिनेटली है, तो गोल तो नहीं है, गुंडोगन का हैट्रिक नहीं है ऑन द फॉलो अप, बट भाई हैज डेविड डिया केप्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द टाई? अभी भी रिमेंबर देयर आर अबाउट 20 मिनट्स लेफ्ट। डेरेन अग्रीड ब्रो, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं विद दिस थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जा रही, व्हाई आई डोंट नो। विल लेट यू नो ब्रो। गर्नाचो, ओ भाई ऑलमोस्ट अ गोल, Garnacho with the ball यार, all of a sudden and almost a goal यार। लेकिन both playing in the playing 11 is questionable right, साथ में, that's the only reason I am saying कि थोड़ा सा doubt है, क्योंकि गुंडोगन would like to start games as much as Barca is a huge club obviously। नाइस शॉट बाय गर्नाचो यार। I hear you Matate United, लेकिन कोई नहीं, just gone wide। Bellingham was the Frankie de Jong next season, too much fun। Yeah, well, how many likes have we got guys? Have we reached 100 like target guys? Come on almighty fam। I would not call him a super duper star kind of thing। Yes, obviously sought after था, यंग विंगर, बहुत एक्साइटेड होते हैं भाई, चेल्सी फैन भी था, हाँ फॉर ऑल वी नो, इंग्लिशमैन भी है, तो वो ज़्यादा हाइप हो जाता है। और लॉकडाउन के समय स्पेशली लोगों ने बहुत देखा उसको, बुंडेसलीगा सबसे पहले शुरू हुआ था, याद है तो। Him and Haaland had that thing together। भाई Bruno Fernandes winning a corner, important corner for Manchester United, very important corner in my opinion। याद रखिए सिटी स्कोर्ड ऑफ अ कॉर्नर द सेकंड गोल, द विनर एज थिंग्स स्टैंड। लेकिन हाँ, तो सैंचो का ये भी है कि यार कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस था, कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग, रिमेंबर वो एक सिटी प्लेयर भी थे, तो मे बी डिडंट टेक वेल टू द मीडिया अटेंशन ब्रो, दैट्स ऑल आई वुड से। लेकिन एबिलिटी तो है, एंड आई थिंक अभी भी यंग है, पीपल फॉरगेट दैट। अरे नाइस बॉल यार, लेकिन जस्ट अबाउट क्लियर बाय सिटी ब्रो। मैनचेस्टर यूनाइटेड टर्निंग इट ऑन, ये क्या हो गया? संजीव काफी बात की यार इसी स्ट्रीम में, पहले आप चेक कर सकते हो, एज वेल एज लास्ट 2 स्ट्रीम्स ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। अभी बहुत अर्ली सुता बदास, विल डू द प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस लेटर ऑन। लाइप्जिग वर्सेस फ्रैंकफर्ट देखोगे फाइनल? भाई वी आर लाइव फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स गौरव, सो उसके स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं देखूंगा ऑब्वियसली। Is City destined for the trouble? Looks like it। As much as I would want an Italian team to win, वो इंटर मिलान है यार। एसी मिलान आई वांटेड जो नहीं पहुंच पाई, बट रियलिस्टिक वही लग रहा है भाई। सिटी डिफेंडिंग, हराम बॉल बाय सिटी ब्रो, लास्ट 7-8 मिनट्स, ये क्या हो रहा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड टर्निंग इट ऑन, लेकिन नहीं, pretty sure वो स्ट्रक्चर रख रहे हैं which is good for them and they will take it happily, जो उन्होंने दिखा है। see that is what City has changed the last couple of years। लास्ट सीजन आपको याद है एटलेटिको मैड्रिड के साथ में जो मैच हुआ था? I remember that game in the Champions League quarter final, was it? That was a similar one in the second leg। Garnacho nice, और a nice dribbling bro, but लेकिन in the end well done by City as well। first touch Bruno, लेकिन Garnacho doesn't get it, won by Casemiro। भाई फ्री किक नहीं थी यार मेरे लिए, कम ऑन, कैसमीरो का फ्री किक दिया यार, आई डोंट थिंक इट्स अ फ्री किक। भाई ये क्या चुई मुई ऐसे क्या दे रहे यार रेफरीज?
Come on, that's not a free kick, yaar. Come on, man. Ref, get a life. Get a life, man. ये लोग साला फुटबॉल खेले भी है क्या रेफरीज? Seriously, man. I know it's easy for me to sit and tell, man. भाई क्या बात है यार, सब लोग 60 lakhs भी नहीं है. Anyway, let's go on यार. क्या बात है यार भाई, परसों के स्ट्रीम में आप 8,000 लोग देख रहे हो. Let's be real, man. And I love the community, bro. Big up to the content creator. We had got a known content creator. You all know what happened, bro. If you're telling me I'm not known after 2 years, really demotivating. But motivation from the people who are members and mods and my almighty fam for sure always. But koi nahi. I will not never give up, bro. और हम मस्ती मजाक भी करते हैं यार. Guys, don't judge us यार by hearing to people who call us भैया भैया just for the sake of it, who actually do not really respect. लेकिन बोलते हैं कुछ लोग, not everyone, कुछ लोग. तो भाई आप हमारे रिएक्शंस देखिए, आप हमारे कंटेंट देखिए, आप हमें हमारा मस्ती मजाक देखिए, मीम्स देखिए, सब चीज देखिए यार. गिव अस अ चांस, गिव अस अ फकिंग चांस. और हम तो घंटा जानते हैं. सॉरी गाइस फॉर द लैंग्वेज. दैट्स वेयर 1 सेकंड में 3 रन वापस ड्रॉप हो गया. मस्ट लव. चलो कोई नहीं, लेट्स गेट बैक टू द गेम. हाँ आशीष, हम बताइए आशीष हमें. वी हैड कवर्ड इट एज वेल. लाइक वी ट्राई एंड कवर एवरीथिंग ब्रो, बट पीपल थिंक वी डोंट. बट कोई नहीं, यूनाइटेड अब बेटर बिल्ड कर रहा है. अगर ऐसे ही रहा, 1-2 चांसेस मिले. आई थिंक जो कैसेमीरो वाला मोमेंट था ना, जहां पर फाउल दिया, आई थॉट दैट वाज अ मोमेंट. समथिंग लाइक दैट दे हैव टू डू. थोड़ा सा दे हैव टू लोड वन फ्लैंक और स्विच प्ले. क्योंकि उससे क्या होगा, सिटी जो बहुत ही बेसिकली स्ट्रक्चर रखना चाह रही है, माइट बी बैफल्ड इन दैट मोमेंट. डेफिनेटली फाउल है यहाँ पर अगेंस्ट सिटी. अगेन बर्नार्डो सिल्वा हैज हैड अ मिक्स्ड गेम इन माय ओपिनियन. भाई फाइनली चेंज कमिंग इन द 78th मिनट. आई थिंक अभी कौन आएगा? वेगॉर्स आएगा, प्रीटी श्योर. नहीं भाई, कैन वाउट वेगॉर्स स्कोर व्हाट इज थर्ड गोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. जेडन सैंचो गोइंग ऑफ, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था. प्रीटी श्योर रैशफोर्ड विल प्ले लेफ्टिश अभी. वेगहॉर्स्ट सेंट्रली खेलेंगे अप फ्रंट. फर्नांडिस खेलेंगे आई बिलीव व्हाट इन बिहाइंड, और गर्नाचो राइट विंग, और इट माइट बी वेगहॉर्स्ट एंड रैशफोर्ड अप टॉप. They might actually do that. They might just go 4-1-3-2. फ्रेड अभी तक है लेकिन इंटरेस्टिंगली. कैसेमीरो प्लेइंग लाइक अ कैम. फ्रेड फाउल यार. फ्रेड डेफिनेटली येलो कार्ड है. फ्रेड को भी आई थिंक देयर विल बी अ चेंज ब्रो. एज मच एज देयर इज 12 मिनट्स लेफ्ट. येलो कार्ड मिल गया. अब आई थिंक मैकटोमिने आ सकते हैं, नोइंग इट्स एन एफए कप फाइनल. जस्ट सेइंग. हाँ भाई, बस प्रॉब्लम क्या है ना भाई, हम धीरे धीरे होंगे बट डेफिनेटली होंगे. विल गेट टू दैट लेवल. प्रॉब्लम है जब तक हम वहां जाएंगे भाई, बाकी लोग विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड प्रॉब्ली डिजर्व एज वेल विल गो टू एक्सपोनेंशियल हाइट्स. दैट्स द डिफरेंस एंड पीपल फॉरगेट अस. दैट्स इंडिया ब्रो. अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कंट्री ना, बहुत ही भेड़ चाल है मेरे भाई. और अभी देखो, दो दो लोग देख रहे हैं यार. हमारे 3,700 लोग हैं यार. 2 लोग देख रहे हैं मुझे. वाओ, ग्रेट, ऑसम. कोई नहीं, हम तो घंटा जानते हैं भाई. हम तो घंटा जानते हैं. दैट्स द स्पिरिट ब्रो. दैट्स द फकिंग स्पिरिट. मैं जो भी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है भाई. हम तो घंटा जानते हैं यार. And I mean it, literally I mean it bro, this time. Everyone, if you know you know. चेल्सी वीडियो लगाता हूं तो भाई फिर तब भी न्यूट्रल्स जो घंटा जानते हैं चेल्सी के बारे में, उनको मिलता है. और ऑलमोस्ट गोल आ गया भाई. यहां पर न्यूट्रल मैं करता हूं तो भाई हम तो और भी घंटा जानते हैं. झक मारे भाई 25 साल से, 2 साल से झक मारे. कोई नहीं, hopefully we'll have some luck as well. A fucking luck which probably some teams generally get it. Probably we'll also get it. कोई नहीं, let's get there man. हाँ भाई, स्पीकर फाड़ने के लिए चलाया भाई. हम तो घंटा जानते हैं भाई. द स्पोर्ट जीनियस, आई हैव लॉस्ट इट. एंड यस, पीपल मैसेज मी ब्रो, आर यू ओके, आर यू ओके, चेक योर बीपी. फक यू ब्रो, फक यू, फक यू, यू गाइस, फक यू मैन. यस, टेक इट मैन.
Take it. Fuck you, man. You assholes. Show offs. Show ki yaar you are concerned. If you're really concerned, there would have been better ways, man. क्योंकि हम तो घंटा जानते हैं यार. हमको तो बात करना आता नहीं है ना. कोई नहीं. It's easy to say that be normal, karte jao. It's very easy to say, guys. It's very easy to say. Trust me. And this release is important for me as well. Because हम तो एक्चुअली घंटा जानते हैं is what they're proving. और हमारी क्या भाई कम्युनिटी है वो, इतना फॉलो द क्राउड है. मैं दूसरे चैनल में तो बड़े चैनल में भाई वहां पर 11,000 देखेंगे. मैं बड़े चैनल वाले को मेरे यहाँ लाता हूँ तो वहां 5,000 लोग देखेंगे. लेकिन मैं अकेला करता हूँ तो मैं तो घंटा जानता हूँ भाई. और वो लोग मुझे भैया बुलाते हो. आप लोग अंधे हो. Those guys, respect me for a reason. Yes, you guys, majority may not like watching me. तब क्यों झूठे वादे क्यों किए भाई? Why did you give me the support to keep the channel and keep the fight on when I lost the channel? If you people who know it. And if you see the messages, you'll know exactly what I'm talking about. That's our country, unfortunately, yaar. Bhed chal. But anyway, talk about bhed chal, भाई. Man City fans सब पैदा हो गए भाई. Man City fans पैदा हो गए और भी आने वाले हैं. So congratulations, Man City, yaar. And I'm losing it, bro. Totally losing it. Because my club is ruined as things stand. And here Man City is going to next levels. But at the same time, भाई हमने जो मैनचेस्टर डर्बी देखा 25 साल से, एल क्लासिको देखा 25 साल से, भाई डजंट मैटर. मैं तो बूढ़ा हो गया क्योंकि हम तियागो सिल्वा को रेस्पेक्ट करेंगे. ओ तियागो सिल्वा बोलेंगे. लेकिन मैं तो बूढ़ा हूं क्योंकि मैं उससे भी छोटा हूं, जो लोग रियलाइज नहीं करते. बट एनीवे, दैट्स हाउ थिंग्स आर. But come on, let's get back to the game. Because the show must go on no matter what. Exactly. The show must go on no matter what. काश मैं भी मैन सिटी फैन होता. काश मैं भी बार्सा फैन होता. विद ऑल डू रेस्पेक्ट ऑल द बार्सा फैंस. काश मैं भी रियल मैड्रिड फैन होता. राइट. काश मेरा भी नाम होता जो बेसिकली एक क्लिक बेट लाता. राइट. लेट्स गेट अ मेक ओवर ब्रो. नहीं यार, नहीं कर सकते वैसे डेरेन यार. अनफॉर्चुनेटली लोग और भी भूल जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली. अरे गोल आ गया ऑलमोस्ट रिबाउंड में. हालैंड का और भी गोल आ गया यार. नहीं, कुछ लोग हैं यार जो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं. कुछ लोग हैं, बहुत हैंडफुल है. बट यू गाइज नो इट. एंड कुछ लोग जो दिखाते हैं यार, फिर भी भैया भैया बोलते हैं यार, फिर भी एक्चुअली घंटा समझते हैं मुझको. और हाँ भाई, ऐसे ही टाइम पास किया था. काया हैवर्ट्स ने आकर मिल लिया यार. जस्ट after looking at my channel, Chelsea thought, okay, fine, it's worth calling this guy, inviting him. ऐसे ही यार टाइम पास. Anyway, नंगा नाच शुरू करना पड़ेगा भाई. नंगा नाच शुरू करना पड़ेगा. पागल हो गया भाई. अंकित बोल दो दुनिया को, यस आई एम मैड बिकॉज वॉट एवर आई से डजंट मैटर. क्योंकि हम तो घंटा जानते हैं नहीं वे. राइट. हम तो ऐसे ही क्लिक्स के लिए करते हैं ना. करेक्ट. सीरियसली मैन, व्हेन विल अ फकिंग कंट्री इवॉल्व ब्रो. अपना फुटबॉल कम्युनिटी भी वही है बेसिकली. 2-3 क्लब जानते वही है. बाकी फुटबॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता. कुछ ये नहीं है. हम साला 25 साल पहले का वीडियो डाले तो हम तो बूढ़े हैं. बाकी लोग डाले तो भाई वो तो भाई वाओ वाओ ऑसम स्टफ मैन, ऑसम स्टफ. I know there'll be a lot of hate I'll be getting a lot of forwards. चमचे अभी भी क्लिप देंगे. मैं बार दौरा पड़ता है. अभी मुझे दौरा पड़ता है. पागल हूँ भाई. ब्रिंग इट ऑन मैन. जो लोग दिखावा करते हैं ना, मैं एटलीस्ट तो तुम लोग जैसे दोगलापन नहीं करता. दोगलापन नहीं करता. मैं डायरेक्टली बोलता हूँ. ठीक है. Just use and throw fuckers, bro. Just use and throw fuckers. People don't know the truth. Because मैं इतना चीप नहीं हूँ नाम लेकर मैं बोलूँ वो सब चीज. Anyway. Ass lickers. A lot of them. Trust me, there are fucking lot of them. Ass lickers. जैसे अभी सिटी फैंस बन रहे हैं भाई. मच रेस्पेक्ट ऑल द सिटी फैंस ब्रो. लेकिन जस्ट लेट्स बी रियल. जैसे सिटी फैंस बन रहे हैं यार बिंदास अभी. भाई मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं हूं. मैं फील कर रहा हूं वैसे. इमेजिन व्हाट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ. इट्स गोना बी अ ट्रेबल ब्रो. सिटी लुक्स लाइक इट.
It's going to be treble. मैं थोड़ा मैं चैट नहीं ले रहा भाई. Much love to everyone. Big shout out to Derain, the sports genius, Sanjeev, Keshav, the 6 people who are watching us, bro. Much love. Ashish, Gaurav, of course. जितने लोग देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो मैं पोस्ट करता हूँ, उससे ज्यादा मैं खुद का सेल्फ प्रमोट करता हूँ. But still I fight, bro. Has anyone fucking thought how it feels to be in my shoes for 2 fucking years? And I'm not even share the kind of things I've sacrificed in my life for this. And I don't want sympathy. I'm just trying to share my story as a friend, which I believe you guys are. And I need to motivate myself for another stream on Almighty Blues FC, which I need to promote again because हम तो घंटा जानते हैं भाई 1 घंटे में. हाँ भाई केशव, 100% अग्रीड ब्रो. लेट्स बी रियल. कुछ लोग हैं जेन्युइन, मैं हैंडफुल को जानता हूँ. विदाउट सम पीपल हु आर लाइक वायरल, अपार्ट फ्रॉम देम, कुछ लोग हैं, डेफिनेटली है. है यार, मतलब फॉलो द क्राउड होते हैं यार, मतलब बीट क्लब और बीट जनरली मीडिया यार, दैट्स हाउ थिंग्स आर. आप बेसिकली चेल्सी की बात करो तब मुझे नहीं बुलाइए, और जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात बुलाओ तो कॉल अनदर चेल्सी फैन. वाओ, हाँ क्या लॉजिक है. क्यों? क्योंकि आपको क्लिक्स चाहिए. इट्स क्लियर ब्रो. सेल्स मैन, थिंग्स सेल. एटलीस्ट मुझे इतना मालूम है, इतना गर्व डेफिनेटली होगा, चाहे मैं फेलियर हूँ या सक्सेसफुल, वट एवर इन दिस फील्ड, विद यू गाइज सपोर्ट एंड यू गाइज एज वेल अलॉन्ग विद मी. एक चीज पता है भाई, मैं फेक तो नहीं था. मैं आई एम व्हाट आई वाज एंड आई डू इट फॉर माय पैशन. आई डू इट फॉर माय पैशन एंड डू इट फॉर माय ड्रीम. सिंपल एज दैट. संजीव बोल रहा, आई कांट सपोर्ट इंटर मिलान इवन आई डोंट वांट मैन सिटी आल्सो विन चैंपियंस लीग यार, एंड इट्स माय ओपिनियन. दोनों. वे संजीव एग्जैक्टली नोस, इवन ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एसी मिलान फॉर पीपल हु डू नॉट नो. बारसा फैन इन द हाउस, क्यूलर. लेकिन हाँ, अगेन भाई, मैं जब बोला ना, काश मैं सिटी फैन होता, काश मैं बारसा फैन होता, रियल मैड्रिड फैन होता. नथिंग अगेंस्ट द बारसा फैंस ब्रो, बट इफ you're a content creator you exactly know what it is. Again, people say that people might find me boring. I disagree though highly. मेरा content boring नहीं है. There will be some drama, some entertainment, some fun, some serious football talks. I think ये mixed bag बहुत ही कम मिलता है, to be very honest. But people obviously stereotype, scapegoat, और who by gullible, if people know it. Then ये जरूर मैं बोलूँगा that easy targets बन जाते हैं यार. Anyway, यहाँ भी एक गोल आने वाला है. अरे भाई, सिटी का ऑलमोस्ट गोल आ गया. और भाई, लास्ट फ्यू मिनट्स आई बीन स्पीकिंग पर्सनल थिंग्स ब्रो. टोटली फाइन, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल. नहीं नहीं, ठीक है यार डेरिन. दैट्स हाउ थिंग्स आर पीपल. नेथन आके आ गया यार. भाई, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. नेथन गेट्स अबाउट 5 लास्ट मिनट्स. विल ही प्ले इन द चैंपियंस लीग फाइनल? हम बात करेंगे नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट वीक. ग्रिलिश गोइंग ऑफ, तो दे आर शोरिंग द बैक. सिटी दैट इज. आई एम सरप्राइज्ड कि फ्रेड इज स्टिल ऑन द पिच. नहीं नहीं, ठीक है यार संजीव, इट्स अबाउट ओपिनियंस. अगेन आई अप्रिशिएट इट यार. आई नो मैं हैंडबॉल का अपील है, लेकिन नहीं मिला यार. बॉल इज द हैंड. अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं बोलना चाहूंगा यार, नैरो विक्ट्रीज व्हाट आई वाज अस्यूमिंग फॉर यूनाइटेड, लेकिन काफी लोग ने बोला था सिटी 2-1, और यू गाइस हैव ऑलमोस्ट बीन प्रूवन राइट. आई नो अभी भी स्टॉपेज टाइम बाकी है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड आई वुड लाइक टू से यार, गुड फाइट यार, यू गेव अ गुड फाइट फॉर श्योर. बट रियली डिसहार्टनिंग रहेगा द वे दैट यू लॉस्ट द गेम, द सेकंड गोल यार. रियली you wouldn't take that in a normal scenario, especially a Manchester derby and a FA Cup final. 3-2, wow! History made by them as well, yaar. नहीं, we will try and do it यार. Midweek है ना, we'll try and do it.
गौरव नहीं यार, रखा था यार पोजीशन, थोड़ा बहुत पोजीशन रखा था फॉर श्योर। आई वुड नॉट से कि नहीं रखा था, बट वही है, सिटी वर कंट्रोलिंग इन सेकंड और थर्ड गियर। फोर्डन चैलेंज ऑन लूक शॉ, टू इंग्लिशमैन। यस, काफी लोग ने बोला था, स्पोर्ट्स जीनियस इंक्लूडेड, बट guys, seriously man, I'm thinking whether I should stop watch alongs. Just do let me know bro. मतलब I don't know, क्योंकि वन ऑफ द रेयर क्रिकेट चैनल्स आल्सो इन द कम्युनिटी, स्टिल वी डोंट गेट मच लव वहां पर। गोल आने वाला है, अरे भाई एक सेकंड भाई, व्हाट अ चांस मिस्ड, मैकटोमिने। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू कम। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया सिटी को ऑलमोस्ट विनर्स, शुड दे हैव डन बेटर। भाई लूक शॉ का आई थिंक बॉल था, एंड इट वाज प्रीटी श्योर इट वाज मैकटोमिने, राइट? वरान एंड मैकटोमिने का चांस था क्या इन द बॉक्स? इट हिट द बार और फिर इट वेंट टू कॉर्नर। नहीं यार, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है यार, एट माय एज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ब्रो टू अदर्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड सो दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड क्यूरेटेड कंटेंट। उसमें क्लिक्स कम आते हैं क्यूरेटेड कंटेंट में, बट आई एंजॉय दैट मोर टू बी ऑनेस्ट, एंड it's about time as well. I rather do something constructive in that time, because let's be real, just saying, मतलब I'll provide the same amount of content, don't worry. मैं पूछ रहा हूँ, it's a question. Wasteful, पता नहीं यार, I would still say that yes, Varane should have scored in the first half also, you can argue, but ऐसा नहीं बोलूंगा that wasteful वाला चीज यार, come on, हालैंड का भी एक चांस था। ओटेगा saved it यार, तो you have to give to ओटेगा। वरान का चांस था यहाँ पर वापस, मैकटोमिने एंड वरान, वाओ, ओटेगा डबल सेव ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं मैं खाली चेल्सी वाला नहीं करना चाहता, फिर पीपल stereotype me as a Chelsea fan, which is obviously we are minority in this country, and for whatever reason भाई, a certain couple of people only know about Chelsea। हम तो घंटा जानते हैं भाई नरेन, आपको पता ही है। नहीं, WTC फाइनल वॉच अलोंग तो नहीं करेंगे, वी विल डेफिनेटली डू प्रीव्यू रिव्यूज, शगुन, मे बी डेली, मे बी, ये तो कल तो एक है ही स्ट्रीम शगुन। हाँ कल है, और आफ्टर द गेम तो वही दो स्ट्रीम्स पक्के हैं केशव। लेकिन बीच में डिपेंड्स ऑन द गेम, वी माइट सेट अप डेली एज वेल, लेकिन वॉच अलोंग नहीं होगा, इट विल डू मोस्ट लाइक अ रिव्यू थिंग, प्री मैच और रिव्यू, दो तीन स्ट्रीम से पक्के हैं नेक्स्ट 5-6 दिन में। मतलब बैलेंस आउट हो गया ना स्पोर्ट जीनियस, बट हाँ दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर, राइट भाई? समटाइम्स आई फील यस आई शुड नॉट रियली शाउट द वे आई थिंक, बिकॉज मेरा जो, आई नो अभी ट्विटर पे भी देख रहे लोग यार, कुछ लोगों को तो भाई हिंदी समझ में नहीं आती, वो लोग भी देख रहे होंगे और हंसते होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट नो, दैट्स द नीड ऑफ द आवर यार। वी आर एक छोटा तुच्छ चैनल हो भाई, मैं एक बंदा हो जो जस्ट अपना जिंदगी दिया भाई फुटबॉल के लिए, बट पीपल डोंट रियलाइज रिलेट टू इट, सो फेयर इनफ यार। आप लोगों को गांड मस्ती चाहिए तो ठीक है, मैं गांड मस्ती करता नहीं हूं आप लोग के लिए। मोटिवेशन की कमी नहीं है डेरिन, बट डिसअपॉइंटमेंट होती है एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, बट मच लव यार। Yeah, T20 ka watch alongs only we do. We always do, always cover. And for people who do not know, we actually cover these things from last 2.5 years, bro. Yes, yes, I'm sure. Congratulations, yaar. यहाँ पर सिटी are winning it. Last second है, bro. भाई double confirmed. What a season for City fans, yaar. Next level. Yes, Pramodini, congratulations, yaar, to all the Man City fans. I know energy कम है मेरे में, but that's how things are, bro. क्योंकि हम तो घंटा जानते हैं मेरे भाई,
बहन सब लोग. टू बी ऑनेस्ट नो, मतलब मैं थोड़ा और ज्यादा पर्सनल हो रहा हूँ यार. और यहाँ पर आई नो आई एम सेइंग थिंग्स व्हिच आई शुडंट. Somewhere down the line, even the kind of backing I got used to get from my friends and family, I'm not getting off late. I'll be very honest with you guys, because I have given it a lot of hard work, bro. My bros, मुझे sympathy नहीं चाहिए. I just need constructive feedback. I need some support if possible, which I think I deserve. We as a channel, as a fan, we deserve. But we need some more, because I don't have that kind of network such as whatever to spread. But by congratulations यहाँ पर तो मैन सिटी जीत गई यार. मैन सिटी फैंस and Barca fans, congratulations. Barca have won it. Of course, the first Champions League was against Chelsea. You all remember 2021, was it, Sanjeev? लेकिन हाँ, everyone, let's hit that like button, but do not forget Manchester United fought hard. So commiseration to Manchester United. कहीं ना कहीं they were lucky and unlucky, like the sport genius is saying. But let's be real. Man City in third gear was able to beat Manchester United hands down. ऐसा नहीं है. Yes, एक चांस था towards the end for Varane और McTominay, as well as first term में Varane का चांस था. But really speaking, City probably should have scored even more. कंट्रोल सिटी ने ही किया था. XG चलो बोलने की बात होती है. They didn't take the chances. Fair enough, you can say that. But I would still say that Man City did not take it to fourth gear, second half में especially. So with this, I think the FA Cup final, I think deservingly goes to Man City. And ये भी बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा luck factor था with Manchester United for that moment which mattered in terms of the penalty. Despite that, Man City came back. हाँ, लेकिन सबसे दुखी बात क्या होगा for a Manchester United is that a fact that second goal जैसे concede किया, first goal पहले 13 seconds में Gundogan getting a double. Talk about doubles, bro. तो वो किया. लेकिन again, how would you rate Manchester United season up? Let me know. Now they've got the Carabao Cup, they've got the top four, and an FA Cup final. It's become an average season for Manchester United standards, and City season could go to the historical levels. अगर वो जीत जाते इंटर मिलान के साथ में नेक्स्ट वीकेंड, जो हम कवर ही करेंगे, यू ऑल नो दैट. Congrats, Man City. Yes, Gundogan man of the match. 7 out of 10 रहा है United का. Again, big up to people who have stayed here long enough. I know sometimes you guys are, some people are just here because you don't want to have no one watching our stream, but आप लोग को अच्छा भी लगता होगा, hopefully थोड़ा बहुत. Hopefully we've had some fun in this stream and the सैकड़ों stream हम जो करते हैं, क्योंकि हम तो घंटा जानते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, doesn't matter, क्योंकि हमारा नाम नहीं है something fancy, which probably I made a mistake when I started off in this पर्टिकुलर थिंग. और मैं एंड कभी नहीं करूंगा, ये पक्की बात है, प्रॉमिस है मेरा. डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट विल नेवर एंड. बट यस, साथ साथ में डेफिनेटली हेल्प्स इफ यू गाइस आर सपोर्टिंग. आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? विद अ लाइक बटन, विद अ सब्सक्राइब, विद अ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. हम गरीब इंसान जो है, थोड़े बहुत गरीब है, हम जो घंटा जानते हैं, हम थोड़ा बहुत वीडियोज भी करते हैं शॉर्ट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. वहां पर हम लाइव भी है एग्जैक्टली 1 आवर फ्रॉम नाउ. तो भूलेगा मत, वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम हम करेंगे. नॉट अ रिव्यू स्ट्रीम पर से, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट वहां पर हम बात करेंगे मोर अबाउट EPL ट्रांसफर्स, द टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ say a Chelsea, a Pochettino, what he was at Spurs and whatnot. We have a special guest, but I have some surprise for you all from my end as well. So hopefully I am in a better mood come 1 hour from now, and hopefully you guys join. And I'm not sad about Man City winning if people are thinking that way. Big up to everyone joining. Evolution Gaming Lux, a Man City fan in the house, bhai. Congratulations, भाई. हाँ, emojis आ रहे हैं RCB के. विराट कोहली has supported. Yes, विराट कोहली has supported Man City, I believe, आज. But yes, congratulations to Barca family as well. Absolutely, what a comeback. 2-0 down and they came back to win the second Champions League, I believe. बिल्कुल भाई केशव, much love. Gaurav as well. प्रमोदनी, यस भाई. अगेन, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो व्हाट वी वर वर्सेस व्हाट वी आर. प्रमोदनी, चेक आउट आवर playlist of both the channels. You'll exactly know what I'm talking about. I would love to disagree, with all due respect. I know कहीं ना कहीं मुझे criticism लेना चाहिए, feedback लेना चाहिए, but I won't. I will say I can prove it to you. I can give you examples and tell you a lot of channels get much better hit rates with some घटिया thumbnails, man. Let's be real about it. Not everyone, some do. एंड दैट्स अ फैक्ट ब्रो. प्रमोदनी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ भाई वहां पर. बट सर्टनली आप DM करिए टू बी स्पेसिफिक. इंटरेस्टिंग बोलना इजी है, ये बोलना इजी है, बट पुट इट स्पेसिफिक. दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट. लेकिन मस्ट थैंक्स फॉर दैट.
यस बिल्कुल 10:30 बजे एबीएफसी में ज्वाइन करेंगे. होपफुली एवरीवन हैज डिनर एंड थैंक्स मैन, एब्सोल्युटली थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन टू द विनर्स. एंड यस न्यू मेंबर्स डीएम करिएगा, भूलिएगा मत. माय एड्रेसेस आर बिलो. अगेन हम तो घंटा जानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत होगा भाई. ट्रॉफी सेलिब्रेशन सेक्टर मैं नहीं देखूंगा एफए कप का, बिकॉज मुझे भी थोड़ा चाहिए रेस्ट. और आई विल बी प्रेपिंग फॉर द स्ट्रीम विच इज स्टार्टिंग इन अबाउट 1 आवर्स टाइम एग्जैक्टली फ्रॉम नाउ. तो होपफुली आप लोग हिट कर दिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन वहां पर. बट अगेन बिग अप टू मैनचेस्टर सिटी. जल्दी से मैं अगर दिखाऊं तो गुंडोगन ऑब्वियसली विल टेक द मैन ऑफ द मैच. But I thought Kevin De Bruyne definitely had a great game as well. On the other hand, you can argue Bernardo Silva did not have a great game. फिर भी the fact is, Grealish came off, Walker came off. Told me with De Bruyne coming off as well. Told me कहीं ना कहीं, he is keeping that Inter Milan game in hand. मतलब एक माइंड में, और उससे दिख रहा था यार थर्ड गियर में खेल रही है मैन सिटी, नॉट इन द फोर्थ गियर कम द सेकंड हाफ. But again, Nathan Aki also coming on late definitely helps for the next week. Manchester United, on the other hand, disappointed by Eriksen's performance. Won't lie. Sancho, Eriksen, Fred rating कम है, but I think वो try किया, but he was not good enough. We all know that. Van Bissaka mixed bag. Lindelof, Varane directly at fault for both the goals. मैं directly बोल सकता हूँ with all due respect. David De Gea again mistakes थे, but I think he saved a moment जहाँ पर 3-1 हो सकता था. Remember that as well. Haaland took a shot, but Rashford non-existent. I'm telling it again, Manchester United भाई, आपको रैशफोर्ड नहीं यूज करना है सेंटर फॉरवर्ड. It doesn't work. You need a center forward. It's clear as day for me in big matches especially, if not otherwise as well. But कोई नहीं. See you guys in 1 hour भाई. चलो बिल्कुल मिलते हैं. एंड चलो इतना ही अभी के लिए. एंड ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. कल बाय द वे यहाँ पर भी लाइव है, भूलिएगा मत. चेक आउट द पोल, वहां पर भी मैंने रिमाइंड किया जैसे वेयर आई लिटरली पोस्ट ऑन 10 डिफरेंट प्लेसेस, बिकॉज हम तो घंटा जानते हैं भाई. ओवरडू हो रहा है क्या? बट कोई नहीं, डजंट मैटर व्हाट आई से. Because people who trust me will anyway trust, and which is something that I hope I never lose. But people who do not trust me, मैं यहाँ नंगा नाच नहीं कर सकता. मैं वैसा नहीं हूँ बंदा. ठीक है guys, good night and congratulations Man City. Treble is coming, looks like it. Manchester United ठीक है, work in progress, not to worry. 9:30 10:30 Almighty Blues FC, a fan channel for all to see.